Welcome to Dr. TSP. Welcome to Dr. TSPR show. My Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to all our guests. Another advocate from Karimnagar, Warangal. She is to join. She is on her way. Let me introduce my guests. We have Uzma Shakir. This is Uzma Shakir. She is the General Secretary of Telangana Pradesh Congress Committee. Welcome, madam. And I have Thank you, Doctor. Advocate Mr. Khalil Ahmed, Muslim Seva Sangh President. Welcome, sir. And Thank you. our own respected Advocate Saab and also President of AIMIM. I don't want to enlarge it upon, let people enjoy it. Is Syed Tariq Qadri, All India Majlis Inkhilabe Millat. And then I have another seasoned social activist on various issues, दामोदर रेड्डी गारू. वेलकम टू यू ऑल. आप सभी को नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है. जब से मैं शो अनाउंस किया आज सवेरे से, बिलीव मी, पूरे बैंडविड्थ हैक कर चुके हैं. आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू शो सम इमेजेस right from yesteryears. I'll try to read at least those before we start, which I wanted to show because only then people will understand. And I wanted to show another Supreme Court advocate also, who has come on record on Instagram too after the judgment of Karnataka High Court. Karnataka High Court upheld the ban of hijab. It is a scarf covering around इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दिल पे ले लिए, मज़हब को बीच में लाए. और कर्नाटका भी एक कोर्ट में भी एक शब्द यूज़ करा गया, रिलीजियन, मज़हब का नाम. लेकिन यूनिफॉर्म हम जो कहते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, ताकि अंतर ना हो बच्चों या बच्चियों में, छात्रों या छात्रियों में अंतर ना हो, सभी को एक तरह की पढ़ाई दी जाए और एक तरह की सहूलत दी जाए. आज एक ये लगाने से कि मैं एक उदाहरण भी दे चुका था हैदराबाद में, जब हम अयप्पा के सीज़न में माला धारण करते हैं, बच्चे जब ये स्कार्फ, ब्लैक स्कार्फ लेकर जब स्कूल में गए, वहाँ पर उनको ऑब्जेक्शन किया गया. और हनुमान माला है, और साथ में जब कार्तिक का मास होता है, स्पेशली एक महीना पूरा पूजा पुनस्कार वगैरह रहता है, तभी भी वहाँ पर भी ये किया गया. तब सबने स्वीकार किया, क्योंकि हम ये चाहते कि हमारे बच्चे या बच्चियों जब स्कूल या कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर अच्छी तालीम और पढ़ाई के लिए जाते हैं, या मज़हब को या दूसरे उनकी ख़ानदानी शौहरत को दिखावा करने के लिए नहीं. ఎందుకంటే మతాన్ని బూచిగా చూయించి ఏదైతే ఈ గొడవలు నడుస్తూ ఉన్నాయో, కేవలం అది రాజకీయం కోసమా? కర్ణాటక హైకోర్టు హిజాబ్ను అంగీకరించము, ఏదైతే కర్ణాటక ప్రభుత్వం అక్కడ ఉడిపి కాలేజీలో చెప్పిందో దాన్ని అంగీకరిస్తూ ఉన్నాం అని ఒక కోర్టు కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఏమి అంటే, యూనిఫార్మ్ అనేది ఏదైతే అంటామో అందరి పిల్లలకు ఒకే మాదిరిగా ఉంటుంది, స్కూల్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ. అక్కడ ఈ మతము లేక నేను డబ్బున్నవాడిని నాకు ఈ విధంగా ఉండాలా అనే ఆలోచన ఉండకూడదు అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో కొందరికి పిల్లలకు డబ్బులు సౌకర్యంగా లేకపోవచ్చు. రోజు కొత్త బట్టలు కొత్త విధంగా వేసుకొస్తే ఆ పిల్లలు ఇబ్బంది పడతారు. వీడు కొత్త షూజు కొత్తవి వేసుకొని కొత్త బ్యాగులు అవన్నీ వేసుకొని వస్తే ఇబ్బంది పడతారు. అందుగురించే పిల్లలకు ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు చిన్న వయసులో చిన్న ప్రాయంలో ఉండకూడదు అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతోనే యూనిఫార్మ్, అందరికీ సమాంతరంగా ప్యాంటు షర్ట్ కానీ లేక చుడిదార్ పైన షల్వార్ కానీ ఆ విధంగా ఆడపిల్లలకు మగపిల్లలకు ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది. అది స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. బయట మరి వాళ్ళ ఇష్టం, జాబ్లోకి పోయినా. ఇప్పుడు అదే ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు, ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఆయన సాఫ్రాన్ బట్టలు వేసుకొని రాజ్యాంగ పదవులు ఉన్నారు కదా అని కామెంట్ చేశారు సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్. సో ఇక్కడ మేము అదే వారికి తెలియాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వారు ఉజ్మా షకీర్ గారు వచ్చారు. షీఈ్ లైక్ ఎ సిస్టర్ టు మీ అండ్ షీఈ్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ హర్ హిజాబ్. వి రెస్పెక్ట్ హర్ because it is her dress code which she is very comfortable.
In which way it is going to make difference to me and to all of the panelists? And wonderfully, she is there in Delhi now. She said, we are going to participate, we will discuss in a proper way because we are all citizens. మనమంతా భారతదేశ పౌరులం. First we should not forget. We should discuss, debate and then decide. That is the beauty of democracy. సో ఈ కోర్టు ధర్మిల ఏం జరగబోతుంది, అసలు ఇది అవసరమా? కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున మేము బ్యాన్ చేస్తే లేదు, మాకు హిజాబ్ ఉంటేనే నేను ఎడ్యుకేషన్, వితౌట్ హిజాబ్ నో ఎడ్యుకేషన్ అని ఆ పిల్లలు ఎవరైతే కంప్లైనెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పడం, ఇక్కడ హిజాబ్ ఎట్లా మాకు కూడా ఉండాలని వీళ్ళు మాట్లాడడం. పాతకాలం కొన్ని ఫొటోస్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇట్ డన్. హిందూ మతంలో కూడా ఈరోజు కూడా కొందరు మార్వాడీలు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా చున్నీ మన ఇది కప్పుకుంటారు. వాళ్ళ భరత పాతకాలము మన పెద్దవాళ్ళ ముందుకు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కట్టుకొని వస్తారు. దాన్ని ఏమంటారు, చున్నీ కాదు, మనం కొంగు కప్పుకొని వస్తారు. సాంప్రదాయం వాళ్ళ ఇష్టం, అది ఆ సాంప్రదాయం అట్లా ఉంది. కానీ గొంగట్, కరెక్ట్, గొంగట్. కానీ దాన్నే రాజకీయ లబ్ధి కోసము కులం పేరు మీదనో మతం పేరు మీదనో రెచ్చగొట్టడము, మేము స్కూల్కి ఈ విధంగానే పోతాం అది చెప్పడం వల్ల అవతల నాణ్యానికి అదివైపు, ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్, నౌ దే ఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ది ఆర్డర్ ఈస్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్డ్ ఇన్ ది సొసైటీ ఫర్ నో రీజన్. Unfortunately, children who should go to school or colleges not on the basis of their religious identity, not on the basis of that I have this much of money, no, not on the basis of caste or creed, nor any region. They should go to the school as a student. That is why we say uniform. So well, let us take up the discussion now. Uzma Shakir ji, aapse shuru karte hain hum. Unfortunately, I am unable to show wonderful videos we have got some good yes मैडम, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ. क्या है मैडम ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हिजाब के खिलाफ, इट शुड नॉट बी अलाउड इन कॉलेजेस और स्कूल. पहले तो हम लोगों को जो है ना कोर्ट को अप्रोच करना ही नहीं था. हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोगों को धरना करके अपने हक के लिए लड़ना था. इन अ फेयर मीन कोर्ट को जाना ही नहीं था, क्योंकि जब ये बाबरी मस्जिद का फैसला आया अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो तब से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कोर्ट से कि हम लोगों के हित में कोई फैसला हो. पहले ही जो सरकार है वो एंटी मुस्लिम एंटी माइनॉरिटी है, तो हमें उस हिसाब से चलना चाहिए. पहले ही देखना चाहिए कि हमारे ऊपर कैसे कानून थोपे गए, चाहे वो ट्रिपल तलाक का था, चाहे वो लव जहाद का था, चाहे वो गौरक्षक का था. तो हर चीज जो है मुसलमानों के विरोधी थी, मुसलमानों के हित में कोई भी चीज नहीं थी. आप ये आज से ही नहीं, ये जब से इस्लाम लागू हुआ है, जब से इस्लाम रिलीजन दुनिया में आया है, तब से मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है. क्योंकि मुसलमान जो है मजहब से काफी दूर हो गए हैं. भले यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको मेरी बात गलत दिखती होगी, लेकिन मैं जो हूँ मैं हकीकत बोलती हूँ. आपको जो अच्छा लगता है वो दीन इस्लाम है, बाकी सारा सर के ऊपर से है. आप अपने आप को कहीं ना कहीं पे एडजस्ट और फिट करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक थिंग, लेकिन इट इज नॉट. मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम से भी जो है, तब भी मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म हुआ. मुसलमानों को तब लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारे को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं. हम तो वैसे ही बादशाह फिरौन के जुल्म में थे, बादशाह फिरौन के जबराना इसमें थे, वहां भी मर रहे थे, अब यहाँ भी मरना है. जब मूसा अलैहिस्सलाम उनको बोले समंदर क्रॉस करो, अल्लाह ताला से बात करे, अल्लाह ताला बोले अपनी लकड़ी जो है समंदर में डालो, समंदर के 2 हिस्से हो गए, पूरा लश्कर जो है सेफ हो गया. अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब हमले पे आ रहे थे तो उनको बोले कि आप शिफ्ट हो जाएं दूसरी जगह, मदीना शिफ्ट हो जाएं. बीच में जब उनके ऊपर फिर अटैक हो रहा था, एक गार में जाके छुप गए. वो तो एक मकड़ी ने उनको बचा लिया. क्यों?
क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है, वी आर द सुपीरियर। अल्लाह ताला ने बोला है कि मैं तुम्हारे को बचाऊंगा हर बार, लेकिन हम हमेशा जो है ऐसे इसमें गफलत में रहते हैं कि कुछ करे बिना ही हमारे ऊपर अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की रहमत बरसेगी। हमें तो कोर्ट पहले जाना ही नहीं था। हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक हमें इसको जो है सॉल्व करना था अकॉर्डिंग टू द धरना करके। अब आप देखिए कर्नाटक का जो या बिहार का कहाँ का है वो बुल कार्ट का जो ये लोग रेसिंग करते हैं या जानवरों को दौड़ाते हैं, वो इनका बहुत ही पुराना जो है स्पोर्ट्स है। उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट मना करा, ये लोग धरना करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बिल्कुल ही कोने में दबा दिए। हम लोग एकजुट नहीं होते। मुसलमान अगर एकजुट हो गए, एक साथ हो गए, तो बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। NCR, NPR, CA वो भी हम लोगों के हित में नहीं, वो भी हम लोगों के विरुद्ध। हम लोग कहाँ पे एकजुट हुए हैं, कहाँ पे आवाज उठाई है? ट्रिपल तलाक के लिए हम लोग कहाँ एकजुट हुए, हम लोग कहाँ पे आवाज उठाए? आप ये मानते हैं कि ट्रिपल तलाक आपको सही नहीं है? ट्रिपल तलाक का नहीं है। कुरान में कहाँ पे ट्रिपल तलाक का जिक्र है? नहीं उस्मा जी, एक साथ कहीं पे भी नहीं है। कुरान में ट्रिपल तलाक का है। पहली बार जब आदमी औरत को तलाक देता है तो औरत उसके घर में रहना, पूरे इद्दत के जो हमारे दिन है वो बिताना 100 डे, उसके बाद दूसरी तलाक, उसके बाद तीसरी तलाक। कुरान में कहीं पे भी नहीं है कि आप एक बार ही टक 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 तलाक 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 बोल दो। नहीं है ना फिर वो इसीलिए तो कोर्ट भी वही अपहोल्ड किया और गवर्नमेंट भी एक लेजिस्लेशन लाया ताकि मुस्लिम महिलाओं को उससे कोई फायदा हो। आप उसको भी गलत मान रहे क्या? और ये भी गलत मान रहे कि सुप्रीम कोर्ट आप मुस्लिम्स के खिलाफ है। भाई सरकार इनकी, पावर इनका, सुप्रीम कोर्ट इनका। सुप्रीम कोर्ट को बाबरी मस्जिद हमारे खिलाफ ही दी ना फैसला। नहीं बाबरी मस्जिद की बात ऐसा है, देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन मैडम, अब आप देखिए मुसलमानों के हित में कब कोई फैसला हुआ है? आपका इमेज नहीं आ रहा। आजकल देखिए दूसरा, आपका इमेज नहीं आ रहा। ये जो सारा मुद्दा है, देखिए ये जो सारा मुद्दा है ये लोगों को डाइवर्ट करने के लिए है। यूपी इलेक्शंस थे, बाकी जगह इलेक्शंस थे, 5 स्टेट में इलेक्शंस थे, हर जगह जो है लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। पहले वो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर अटैक करवाए, वो फेल हो गया क्योंकि वो अटैकर जो है गाड़ी के नीचे फायरिंग करा, फ्रांस पे फायरिंग नहीं करा जिसको करनी थी। तो सारा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब ये हिजाब का मुद्दा उठाए ताकि लोग नहीं पूछे कि बीजेपी सरकार कर क्या रही है, उनके झूठे वादों का क्या हुआ। तब आप नहीं उस्मा जी, देखिए कश्मीर फाइल है, वहाँ पे भी कश्मीरी मुस्लिम को उंगली उठ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी को कश्मीर चाहिए, कश्मीरी मुसलमान नहीं चाहिए, कश्मीरी पर्दों के फेवर में है। गुजरात में इतना कांड हुआ मुसलमानों पे, गुजरात में इतने मुसलमान मारे गए, गुजरात फाइल्स क्यों नहीं बनी? नहीं उस्मा जी, मैं यहाँ से आपसे एक आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस इस मुद्दे को लेके कांग्रेस भी बेनिफिट होने की कोशिश की या नहीं? और कांग्रेस आज ये हाल में क्यों है? क्योंकि खाली वो माइनॉरिटीज अपीसमेंट बोल के मेजॉरिटी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अब गलती कांग्रेस की है या नहीं? गलती कांग्रेस की है, मैं मानती हूँ। सबको साथ में लेके चलना ना। नहीं लोगों के दिल में, मेजॉरिटी के दिल में ऐसा जहर फैला दिया गया, ये माइनॉरिटी अपीसमेंट पार्टी है, केवल माइनॉरिटीज को ही देखती है, मेजॉरिटी को कोई इसकी वहाँ पर खिदमत ही नहीं है। इसीलिए और जब बीजेपी ऐसा मुद्दे उठाए मजहब के नाम पे, कुछ भी हो, उनको बरकरार रख के उनको आगे जा रहे। और आपके ओन जो पार्टी के प्रेसिडेंट हो या आपके राहुल गांधी साहब, ये बीजेपी जीतने के बाद उन्होंने मंदिर सब जगह जाना शुरू करे ये लोग, ये हाँ या नहीं? जी देखिए आपका इमेज नहीं आ रहा मैडम, आपका कैमरा थोड़ा उसको ये करे, आपका इमेज नहीं आ रहा उस्मा जी, आपका इमेज। मैं आपके पास फिर आता हूँ, एक बार वो सेट कर लीजिए, मैं फिर आता हूँ आपके पास, इमेज को सही कर लीजिए। हाँ देखिए बीजेपी जो है ना,
उन्होंने इतनी सफायत से वोट कटिंग की है आपकी बात। मायावती जी जो है उन्होंने कैंपेन करे नहीं, वो कहीं फिरी नहीं। पिछली बार जो है उनकी 17 सीट, अब उनकी 1 सीट आई है, 16 सीटों की कुर्बानी दी है उन्होंने। ना अब मैं यहाँ एक ही बात पूछना चाहता हूँ। आपका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी साहब सभी मिलके एक एफिडेविट देने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ अयोध्या के ऊपर, फिर आप कैसा सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस को क्यों नहीं बदनाम करते? कांग्रेस सही है, कांग्रेस ही है ना जो शिलान्यास खोल के, राजीव गांधी साहब ही है ना जो खोले सो। बीजेपी को कैसा? जी हाँ, तब मैं कह रही हूँ। हाँ देखिए वो तब के लोग क्या मशवरा दिए क्या नहीं दिए उससे नहीं है, मैं मानती हूँ। उसके बाद जो है मुसलमान कौम जो है बिखर गई और उसका फायदा जो है हर स्टेट के जो तब के सीएम थे वो लोग उठाए। फॉर एग्जांपल यूपी में तब जो है क्या कहते हैं, यूपी के सीएम जब है तिवारी साहब थे, उन्होंने फायदा उठाया। तिवारी साहब, वो कल्याण सिंह थे तब, तिवारी के बाद जी आपका ओन तिवारी थे जब जी। शिलान्यास सब कुछ हुआ, बाद में कल्याण सिंह थे। मुलायम सिंह यादव उसका फायदा उठाए। उन्होंने मुसलमानों को समेट लिया, मुसलमानों को करीब कर लिया। जो मुसलमान तब जो बिखर गए थे कांग्रेस से नाराज हो गए थे, हर किसी ने जो है ना चांस पे चौका मार लिया। ठीक है, आप ये समझते कि मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, जो भी आतंकवाद के जो हमले हो रहे थे और जो भी पकड़े गए, आप ये मानते हैं कि वो मजहब के नाम लेके नहीं कर रहे थे क्या? कोई भी हो, हम अब किसी को सपोर्ट नहीं करना। जी देखिए, पहले तो इस्लाम इसमें आतंकवाद का है ही नहीं। इस्लाम जो मजहब है वेरी पीसफुल मजहब है। हमारे अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अगर आपके दाएं गाल पे कोई थप्पड़ मारता है उसको बायां गाल भी पेश कर दो। फिर कश्मीर में ऐसा नहीं हो रहा कि कश्मीर ने, जम्मू एंड कश्मीर में इस तरह का नहीं हुआ। मुंबई हादसे, हैदराबाद के हादसे में कौन पकड़ा गया आपको मालूम है? आपके ही गवर्नमेंट पकड़ी है उनको, हम नहीं पकड़े, या कोई बीजेपी वाला नहीं पकड़ा। उसका जिम्मेदार कौन? द गवर्नमेंट। That I'm trying to tell you, it was the Congress government. झूठे वादे करती है। देखिए कश्मीर जो है ना, कश्मीर तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत देते। नहीं, उस्मा जी, यहाँ पर आपको एक ही, सोनिया गांधी शी टुक दी मेजर स्टेप जब हमला हुआ पार्लियामेंट के ऊपर और मुंबई के हादसे जो हुए, पकड़ा गया था पाकिस्तानी के आतंकवादी और उसको फांसी भी दी गई आफ्टर। आप ये नहीं मानते कि वो मुसलमान जो पाकिस्तान के थे वो मुल्क, वो इस्लाम का मुल्क था। इस्लाम, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी पूरे बाकी के मुसलमान इस्लाम जो है बदनाम किया जाए। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं आज, नहीं आप जो बात कर रहे हैं, फिर वहाँ के वहाँ वही लोग पकड़े गए ना मैडम। नहीं उस्मा जी, जब पकड़े गए, जब अब बॉलीवुड का, हॉलीवुड का जो भी फैशन आता है वो सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचता है। अगर वो इस्लामिक मुल्क होता तो वहाँ फैशन का कोई काम नहीं होता। तो ये मानते हैं कि आप ये मानते हैं कि वहाँ के लोग मुसलमान ही नहीं है ना उस्मा जी? मुसलमान कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। आप एक मुसलमान की वजह से पूरे मुसलमानों को बदनाम नहीं कर सकते। ना हर जन नस, ना हर मर्द खुदा पंजे अंगश शक्ता न कर। कोई आदमी किसी के जैसा नहीं है, कोई औरत किसी के जैसी नहीं है। अल्लाह ताला ने 5 उंगलियां दी हैं, ये जब बराबर नहीं है तो आप पूरे मुसलमानों को गलत नहीं बोल सकते, पूरे मुसलमानों को आप आतंकवादी नहीं बोल सकते। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, जब पाकिस्तान की प्रेरणा से वहाँ का एक मुसलमान, वो इस्लाम का मुल्क है, और वहाँ पे जो आतंकवादी आते हैं उनको पकड़ा गया और सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही उनको फांसी भी हुई जब सरकार थी। पकड़िए ना डिफेंस मिनिस्टर को, पकड़िए ना आर्म फोर्सेस को, पकड़िए ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इनको पेनिट्रेट करने देती है। व्हाई डोंट दे लॉक द बॉर्डर्स? इनकी इजाजत के बगैर कैसे? तो ये आप यूपीए गवर्नमेंट का फेल्यूर है ये। उत्तर नहीं, यूपीए गवर्नमेंट का, आपका यूपीए सरकार का फेल्यूर ही है ये। At the cost of their failure, every human being is suffering. That's right. Why should a human being suffer? That's right. Human being makes them dead. They are elected by us. That's right. They are our servants. Very good. Government should protect. Them not on the cost of our lives. Right. Government should protect every citizen. It is the failure of the duty of that day's government. It was UPS government. I'll come back to you, madam. अब थोड़ा दामोदर मीर बोता शायद तारक साहब, आप बने रहिए मैडम थोड़ा। आप या दामोदर गाరు చెప్పండి। निकल गए मैडम? ले उన్నారు షీస్ దేర్।
ఉన్నారా? ఓకే. చెప్పండి. షీస్ జై దేర్. శ్రీరామ్. యా, జై శ్రీరామ్. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆమె ఏమి చెప్పదలుచుకుందో నాకు అర్థం కావడం లేదు. పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా ఇండియాకి సపోర్ట్ చేస్తుందా అనేది చాలా డార్క్ లో పెట్టింది ఇష్యూ. నెంబర్ 1, బీజేపీ గవర్నమెంట్ అంటున్నది బానే ఉంది ఆమె. ఎందుకంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కూడా ముస్లింస్ కు వ్యతిరేకంగా ఎక్కడ ఎటువంటి ఇష్యూస్ జరగలేదు. ఫస్ట్ మనం అది అర్థం చేసుకోవాలి. Yeah. ఎక్కడ టెర్రరిజం యాక్టివిటీస్ జరగలేదు 2014 నుంచి. ప్రజల మధ్య నుంచి ఎక్కడ బాంబులు వేయలేదు. భారతదేశం వేసిన బాంబులన్నీ భారతీయులు వేయలేదు, పాకిస్తాన్ వాళ్ళు వేశారు. అది ఒకటి మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కొన్ని మత కళాలు అంత ముందు జరిగి ఉండొచ్చు, అది చాలా సార్లు జరిగినాయి, అది డిఫరెంట్ ఇష్యూస్, అవన్నీ మనం పక్కన పెట్టుకుందాం. బీజేపీ గవర్నమెంట్ యొక్క మెయిన్ మోటో ఏంటిది? సబ్కా సాత్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్. మేము దాని మీద పోతున్నాం. ఇంకోటి, గవర్నమెంట్ అగెన్స్ట్ ముస్లిమ్స్ ఉందని చెప్పి అంటున్నారు. ఒక్క రీజన్ ఆమె చెప్పగలుగుతుందా? గవర్నమెంట్ అగెన్స్ట్ ముస్లిం వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఒక్క రీజన్ ఆమె చెప్పలేదు. బేటీ పడే ఎందుకు తీసుకొచ్చాం? పూర్ ముస్లిమ్స్ అమ్మాయిలను ఎడ్యుకేట్ చేస్తే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడతారు, వాళ్ళకి సమాజంలో వాళ్ళకి ఒక గుర్తింపు ఉండాలని ఒక ఉద్దేశంతో అవి తీసుకొచ్చాం. ట్రిపుల్ తలాక్ గురించి ఏం మాట్లాడుతుంది ఆ అమ్మాయి? ట్రిపుల్ తలాక్ అగెనిస్ట్ అట. ఒక అమ్మాయి ఏంటి ఈ మోడర్న్ డేస్ లో, ఈవెన్ పాకిస్తాన్ లో కానీ చాలా కంట్రీస్ లో ట్రిపుల్ తలాక్ అనేది తీసివేయడం జరిగింది. ట్రిపుల్ తలాక్ లేదు. ఇంకా ఇండియాలో మత ఛాందసవాదం పెట్టుకొని ఇంకా ట్రిపుల్ తలాక్ ఉండాలంటే వేర్ ఈస్ ద యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? నువ్వు డైవర్స్ కావాలంటే ప్రాసెస్ ఉంది, ఆ ప్రాసెస్ లో పోవాలి. భారతీయులు అన్నమాట ప్రతి ఒక్కరు పోవాలి. అంతేగాని నేను ట్రిపుల్ తలాక్ మాకు అగెనిస్ట్ చేసిందని చెప్పడం అంటే నేను రియల్ గా సిగ్గుపడుతున్నాను ఆ ఇష్యూలో. ఒక ముస్లిం యువతి అయి ఉండి కూడా ట్రిపుల్ తలాక్ను సమర్థిస్తున్నదంటే ఈ రోజు కూడా మనం ఎక్కడ పోతున్నాం? ఏంటి సమాజంలో ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు నువ్వు? అంటే అమ్మాయిలు ముందు పోకూడదా? ముస్లిం యువతులు ముందుకు రాకూడదా? ఇంకా వాళ్ళు అదే బుర్గా అక్కడనే ఉంచి వాళ్ళని ఇంకా లోపలికి తీసుకెళ్ళాలా? వాళ్ళకి ఇంకా మత ఛాందసం నేర్పాలా? మనము మతం అనేది గడప లోపల ఉండాలి. గడప దాటితే మనం భారతీయులం అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంతేగాని గడప దాటితే కూడా నేను ముస్లిం అంటే ఎట్లా? నేను చెప్తున్నాను, నేను పాకిస్తాన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను భారతీయుని గడప దాటినప్పుడు, గడప లోపల ఉన్నప్పుడు నీ హిందువును, అది మనం మర్చిపోకూడదు ఎప్పుడు కూడా. మతం అనేది ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి, ఎవరి మతం మీద వాళ్ళకి విశ్వాసం ఉండాలి, విశ్వాసం పెట్టుకోవాలి. కానీ దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని రాజకీయాలు చేయకూడదు. ఎప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ మత రాజకీయాలు ఎప్పుడు చేయలేదు. మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఎక్కడ ఏ పని చేయలేదు. మత రాజకీయాలు చేసేది ఆల్ ఇండియా మీ ఓవైసీ మత రాజకీయాలు. ఓవైసీ భారతీయ జనతా పార్టీకే మద్దతుగా ఉన్నాడు కదా. వారు చెప్పేది 15 నిమిషాలు వదిలేయండి, మీ మొత్తం హిందువులను చంపడేస్తా అన్నాడు. మత పిచ్చి ఎవరికి ఉన్నది? హిందువులకా ఓవైసీకా? పోనీ ఓవైసీ ఇన్ని రోజులు ఇన్ని కథలు చేసింది కదా, ఏ ఒక్క రోజైనా ఒక 10 మంది ముస్లింస్ కు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా చేసి చూపించాడా? ఒక 100 అది ధన్ యోజన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయించాడా? జన్ధన్ కొన్ని వాళ్ళ అకౌంట్ డబ్బులు వేపించాడా? ముస్లింస్ గురించి ఏ రోజైనా పట్టించుకున్నాడా? ఓటు బ్యాంక్ అది కాంగ్రెస్ కానీ లేకపోతే ఈ మత పార్టీలు. దామోదర్ రెడ్డి గారు ఉజ్మా గారు ఏమంటున్నారంటే ఇదే ఓవైసీని అడ్డం పెట్టుకుని మీరు బీజేపీ బెనిఫిట్ అవుతుంది కదా అంటుంది. ఓట్లు చీల్చి ఇప్పుడు అక్కడ కూడా 2 లక్షల ఓట్లు బీజేపీకి ప్లస్ అయినవి. ఇప్పుడు కొన్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మళ్ళీ రోజు పెట్టుకుందాం మనం. అది యూపీలో నిజంగా ఉంటే యూపీలో ఇన్ని సీట్లు మరి ఎందుకు దగ్గర ముస్లిం సీట్లు ఎందుకు పెరగలేదు? మరి అక్కడ మెజారిటీ ఉన్న దగ్గర కొన్ని 70 సీట్లలో వాళ్ళు మెజారిటీ చూపించే కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు మరి అక్కడ ఎందుకు ఒక సీట్ రాలేదు? తప్పు కదా అది. మేము ఎక్కడ ఎవరిని మత ఆధారంగా ఎక్కడ ఏమి చేయలేదు, చాలా క్లియర్గా ఉన్నాం. వీళ్ళు హిజాబ్ మీద ఏమంటారు? మీరు హిజాబ్ మీద ఏమంటారు? హిజాబ్ మీద ఏమంటారు? ఆమె చెప్పింది ప్రతి బాబరీ మసీదు షిప్పుడు మాట్లాడుతుంది. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది
దింపుడు కళ్ళంలో ఉన్నది ఇప్పుడు. దింపుడు కళ్ళం అంటే శ్మశానంలో కాలబెట్టే ముందు, బొంద పెట్టే ముందు వాళ్ళు ఏం చేస్తాం, అక్కడ బండ పెట్టి ఆ కన్సర్న్ పర్సన్స్ వాళ్ళ పేరు పెట్టి పిలుస్తారు. పిలిస్తే లేచి వస్తుందా శవం? శవం ఎప్పుడు లేచి రాదు. కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఈ రోజు దింపుడు కళ్ళం మీద ఉన్నది. ఇంకేం వస్తుంది? ఇంకా ఆమె పట్టుకొని కాంగ్రెస్ ఏదో చెప్పేస్తుంది స్టోరీ, కానీ అయిపోయిన ఇష్యూ అది. అట్లానే మనము అట్లానే దామోదర్ రెడ్డి గారు ప్రజాస్వామ్యంలో అన్ని పార్టీలు ఉండాలని కోరుకుందాం. అట్లా ఏ పార్టీని అంతం చేయలేరు, అది ఎవరి తరం కాదు. అది కాంగ్రెస్ ఎవరు అంతం చేయలేరు, అది వాళ్ళ ఓట్ బ్యాంక్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఓట్లు ప్రజలు విశ్వసిస్తలేరు, అది చెప్పండి. ఇప్పుడు హిజాబ్ గురించి చెప్పండి. కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నా తప్ప ఇప్పుడు మాది బాబ్రీ మసీద్ ఇష్యూ ఎందుకు మాట్లాడాలి అంటే, షీఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఈవెన్ దో సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్. ఎవ్రీబడి షుడ్ యాక్సెప్ట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్. అది అయిపోయింది. అది అన్ని కమ్యూనిటీస్, బోత్ ముస్లిమ్స్ అండ్ హిందూస్ హావ్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ కోడ్. ఆయన బ్రహ్మాండంగా రాముడి గుడి అవుతుంది, అక్కడ మస్జిద్ కూడా కట్టమన్నారు. దట్ ఈస్ ఓవర్, దట్ వీ హావ్ టు యాక్సెప్ట్. అది మళ్ళీ దాని మీద ఇంకొక ఇష్యూ ఎన్సీఆర్ ఎన్పిఆర్ ఇష్యూ మాట్లాడిందా? లెట్ us not get into that. అది మళ్ళీ మనం ప్రత్యేకంగా చేద్దాం. పాసింగ్ కామెంట్స్ ఇండియన్ సిటిజన్, అది మనం వద్దాం దాన్ని. ఎంపీఆర్ అంటే ఏం ఉండకూడదా? మనకు ఐడి కార్డు ఉండకూడదా? గుర్తింపు ఉండకూడదా? నువ్వు ఇండియన్ అని చెప్పి ఎలా చెప్పగలుగుతావు? నువ్వు భారతీయుడు అని ఎలా చెప్పగలుగుతావు? ఒక గుర్తింపు కార్డు ఉంటే తప్పేంటిది? అదో పెద్ద ఇష్యూ అయినట్టు. అదే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లో లేదా గుర్తింపు కార్డు? ఇక్కడ వచ్చే వరకు ఇష్యూస్ వస్తుంటాయా? ఇంకొకటి, కర్ణాటకలో హిజాబ్ అనే ఇష్యూ ఓన్లీ కర్ణాటకలో ఎందుకు వచ్చింది? యూపీ ఎలక్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇక్కడ కొన్ని మతానికి సంబంధించిన టెర్రరిస్ట్ గ్రూపులు హిజాబ్ అనేది ఎగదోశారు. వాళ్ళు రియల్ చెప్తున్నారంటే పాపం పిల్లల్ని ఒక పావులాగా వాడుకున్నారు. వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు లేని ఇష్యూ ఓన్లీ కర్ణాటకలో ఆ ఉడిపి ప్రాంతంలో ఎందుకు వస్తున్నది? వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి హిజాబ్ అనే ఇష్యూను వాళ్ళు పైకి తీసుకొచ్చారు. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పిల్లల మధ్యన ఒక వైషమ్యాలను తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళు. దే వాంట్ అన్రెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. అందరు ముస్లిమ్స్ అని చెప్పడం లేదు. ఇందులో ఓన్లీ ఇట్స్ 1% 2%, మిగిలిన 98% ముస్లిమ్స్ అలా లేరు. కానీ దాన్ని ఏం చేస్తున్నారు? అందరికీ దాన్ని అడ్డగడుతున్నారు. ఇది తప్ప ఆమె చెప్పేదే తప్ప. అసలు కశ్మీర్ ఇష్యూ ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడుతుంది ఆమె. ఏం తెలుసు ఆమె కశ్మీర్ ఇష్యూలో? Let us not become personal. Don't become personal. మనం హిజాబ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి. రియల్ గా స్కూళ్ళల్లో అవసరమా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. స్కూళ్ళల్లో ఎందుకు హిజాబ్ అనేది స్కూళ్ళల్లో అవసరం లేదు. ఫస్ట్ బేసికల్ గా నువ్వు గేట్ వరకు వేసుకోమని చెప్తున్నారు కదా. గేట్ లోపల పోయిన తర్వాత నార్మల్ యూనిఫామ్ వేసుకోమంటున్నారు. అలా తప్పేందుకు పడిస్తారా? హైకోర్టు ఇప్పుడు ఫుల్ ఆల్మోస్ట్ 3 జడ్జెస్ కూర్చొని జడ్జిమెంట్ వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదు. ఏది యాక్సెప్ట్ చేయరు. సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తున్నాం అన్నారు. ఓకే, అది వాళ్ళ ఇష్టం, పక్కన పెడతాం. కానీ తప్పు కదా అది. పిల్లల మధ్యన వైషమ్యాలు తీసుకున్నారు. హిజాబ్ ఇష్యూ తీసుకొచ్చి ఓన్లీ అది యూపీ ఎలక్షన్ల ముందే తీసుకొస్తున్నారు. ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్ హిజాబ్ అనేది? హిందూ తీసుకొచ్చారా? లేదే. అప్పటిదాకా నార్మల్ గా ఉన్న పర్సన్ చాలా సడన్గా హిజాబ్లు, బుర్కాలు ఇవి వేసుకొని వాళ్ళు ఎందుకు మీ ఇద్దరి మధ్యన డివైడ్ చేస్తున్నారు కావాలని? యూపీ ఎలక్షన్ దృష్టిలో వాళ్ళు చేసింది ఇష్యూ తప్ప. అది కొంతమంది వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కేరళ బేస్ అయితే కొన్ని ఉన్నాయో, ఉడిపికి దగ్గర ఉన్నాయో, వాళ్ళు చేసిన ఇష్యూ తప్ప నాట్ పొలిటికల్ గేమ్. ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాడు. అంతమందికి అమ్మాయి అవి తిన్నప్పుడు నార్మల్ డ్రెస్ వేసుకొని ఉంటుంది. హిజాబ్ వేసుకొని అక్కడ వచ్చి పిల్లల ముందు ప్రొవోకేట్ చేయడం, అది ఎంత క్లియర్ గా అవపడుతుంది మనకు? అది ఎంత క్లియర్ గా అవపడుతుంది? మీరు హిజాబ్ ఇష్యూలు ఇచ్చినప్పుడు సానియా మిర్జా గురించి మాట్లాడాలి మనం. సానియా మిర్జా ఎందుకు హిజాబ్ వేసుకొని మరి టెన్నిస్ ఆడడం లేదు? తప్పు కదా ఇది. అంటే స్కూల్స్ పిల్లల్ని ఎందుకంటే సానియా మిర్జా ఉన్నది కాబట్టి స్కూల్ పిల్లల మధ్య యొక్క మైండ్ ను వాళ్ళు డైవర్ట్ చేయడం. ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నాం మనం పిల్లల్ని? పిల్లలకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నాం మనం? పిల్లలకి చెప్పాలి వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ చదువుకోవాలి అనేది ఒక ఇంటెన్షన్ తోటి అక్కడ పోయినప్పుడు ఒక రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఆ స్కూల్స్ ఉంటాయి. ఆ స్కూల్లో ఉన్న రూల్స్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం ఆ పిల్లలు దాని ప్రకారం పోవాల్సిందే. అలా డౌట్ లేదు. ఇష్టం లేదు ఆ స్కూల్లో చదువుకోండి, ఇష్టం లేదు వేరే స్కూల్ ఇవ్వండి, ఎవరు ఆపుతున్నారు? కానీ నేను ఆ స్కూల్లోనే మీ సిస్టమ్ ప్రకారం రాను, మీ రూల్ ప్రకారం రాను, నా ఇష్టం ఉన్నట్టు వస్తా అంటే వాట్ ఇస్ ద రూల్స్? ఆ స్కూల్ కున్న ఆ రూల్స్ ఎందుకు? ఇంకా ప్రతి స్కూల్లో రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ ప్రకారం పోవాల్సిందే మనం.
అంతేగాని ఇష్టం ఉన్నట్టు నేను రాను, నేను రూల్ ఫాలో అవ్వను, అందరి రూల్స్ వేరే ఉంటే నా ఒక్కరు మా 10 మందికి వేరే రూల్ అంటే ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. సెకండ్ ఇంకోటి ప్రతిసారి మైనారిటీస్ అని మాట్లాడుతున్నారు. దే ఆర్ 20%, దే ఆర్ నాట్ మైనారిటీస్. మనం ఇది మర్చిపోవాలి. ఇది మైనారిటీ అనే ఇష్యూ లేదు ముస్లిమ్స్. దే ఆర్ ద ఇండియన్స్, దట్స్ ఆల్. దే ఆర్ భారతీయులు, సంపూర్ణ భారతీయులు వాళ్ళు. అంతేగాని మేము ఇంకా మైనారిటీస్ అని వాళ్ళు గిరిగీసుకొని ఆ గిరి లోపల ఉంటాము, మేము బయటికి రాము అని దేనికోసం ఇవన్నీ చెప్తున్నా? ఓటు బ్యాంక్ తప్ప వేరే ఇష్యూ కాదు కదా. ఎంతసేపు ముస్లిమ్స్ ఓటు బ్యాంకా? డెవలప్మెంట్ పార్ట్ ఎందుకు మాట్లాడడం మనం ఇష్యూ? ముస్లిం ఇష్యూలో డెవలప్మెంట్ పార్ట్ ఎందుకు మాట్లాడతారు? ట్రిపుల్ తలాక్ వల్ల ఎంతమంది అమ్మాయిలు హ్యాపీగా ఉన్నారో తెలుసు మనకు. అంతేగాని ప్రతిదీ మతంతో ముడిపెట్టకూడదు కదా. మీకు గడప లోపల మతం పెట్టుకోండి, ఎవరు ఆప్షన్ లేదు. గడప దాటిని కూడా మతం అంటే ఏంటి? ఇది కరెక్ట్ కాదని నేను చెప్తున్నా. మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను దామోదర్ రెడ్డి గారు. खलील साहब आप बात कर रही हैं या मैं कादरी साहब के पास जाऊं? बात करिए आप खलील साहब, आप बात करने के बाद। हाँ, आवाज आ रही है? आ रहा रेड्डी साहब आ रहा। आज जो हम बैठे बात करने हिजाब और कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट के ताल्लुक से बात कर रहे थे। हाँ। और हमारी बहन उज़मा शकीर भी आए हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के। तो बहुत सारी बातों से मैं उनके एग्री नहीं करता और पूरा इशू को डाइवर्ट कर दिए। हिजाब पे बात होना था और जजमेंट पे बात होना था, बजाय उसके गवर्नमेंट पे फेथ नहीं है। तो ये क्या है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया इसमें। तो ये और सबसे बड़ा भयानक बात उन्होंने क्या बताई कि जुडिशरी पे फेथ नहीं है। मैं 29 ईयर से एडवोकेट हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और अच्छे जजेस को रिप्रेजेंट करा मैं। और कभी मैं इंडियन जुडिशरी में प्रिजुडिस नहीं देखा कि आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, कोई जज ऐसा फील नहीं हुआ कभी। और फिर ये मुसलमान का केस है, हिंदू का केस है, बल्कि हमारी कोर्ट्स पे नहीं हुआ ऐसा। कल भी मैं बहस करा, मैं हाई कोर्ट में और सिटी सिविल कोर्ट भी जाता हूँ, मैं पूरे कोर्ट्स पे फिरता हूँ। तो मैं कभी भी मेरे ऑब्जर्वेशन में नहीं आया कि तुम मुसलमान है, इतनी बड़ी दाढ़ी लेके आते, बल्कि कोई भी नहीं बोला हमको ना। कोई ऐसा डिफरेंस हुआ यानी तो डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं हुआ और प्रिजुडिस भी नहीं है। और हमारे पास जो जजेस आ रहे हैं वो क्वालिफाइड आ रहे हैं। अब हाँ, उसको क्या हो गया कि जुडिशरी को पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। पॉलिटिकलाइज कब से कर रहे हैं कि अब इन्होंने निकाले बाबरी मस्जिद इशू निकाले। बाबरी मस्जिद इशू तो वो जमाने से चल रहा था। अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाद से तो कोई डिसएग्री नहीं करता। एक और जो मस्जिद का जो इशू बना था वो इशू केसी पंत थे, जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, केसी पंत मुख्यमंत्री। तो उस वक्त लोकल बेस पे इशू को रिजॉल्व कर देना था, उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। वहाँ पे लोकल इशू है। अभी हैदराबाद में कई मस्जिदा तोड़ दे रहे हैं, सेक्रेटरीट पे तोड़ दिए 2 मस्जिदा, 1 मंदिर तोड़ दिए, कोई बाप का माई का लाल नहीं है पूछने वाला। ओवैसी की सपोर्टेड गवर्नमेंट है। परसों इधर एक मस्जिद तोड़ दी, जहाँ बोले वहां तोड़ दे रहा। तेलंगाना में मस्जिद कुतुबशाही मस्जिदों को तोड़ रहे, कोई नहीं बोल रहा। तो खास तौर पे ये जो याद करते जाते हैं कि बाबरी मस्जिद, तो उसकी वजह क्या है कि राम जन्मभूमि से लिंक है, एक रिलीजियस फेथ है, उसको हर्ट करने के ऐसे याद कर रहे हैं। तो जो सेक्रेटरीट की मस्जिद भी उतनी इक्वल थी और बाबरी मस्जिद भी उतना ही था आपके लिए, और फिर दिल्ली की जामे मस्जिद भी बराबर है। तो आपको यहाँ पे सेक्रेटरीट की मस्जिद में कभी ओवैसी पुकार के नहीं बोले और न कोई उज़्मा शाकिर पुकारे। अब ये याद रहेगा बाबरी मस्जिद का। तो इस्लाम में क्या है कि कुछ डूस एंड डोंट्स हैं, कुछ ऑप्शनल्स हैं। तो 5 एसेंशियल्स हैं इस्लाम में। एक ईमान है, ईमान बोले तो फेथ इन ऑलमाइटी। दूसरा नमाज पढ़ना है, तीसरा ज़कात देना है, और फिर रोजा रहना है और हज करना है। तो हज और ज़कात क्या है कि वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है। ज़कात वेल्दी देता चैरिटी, और हज को जो जाता पिलग्रिमेज को वो भी वेल्दी जाता, पूरी तरह से कंपल्सरी नहीं है। ईमान, नमाज, रोजा बोले फास्टिंग,
ये 3 एसेंशियल आते हैं, 2 5 एसेंशियल में 2 भी ऑप्शनली हो गए हो। तो अब रही बात क्या है कि इसमें ये जो बोल रहे हैं कि भाई मस्जिद पे नमाज कब होती है कि डिस्प्यूट नहीं होना, विदाउट डिस्प्यूट। तो बाबरी मस्जिद में डिस्प्यूट है वहां पे कि एक पार्टी बोल रही कि ये हमारा है टाइटल, एक पार्टी बोल रही कि ये हमारा फेथ है, यहाँ पे जन्मभूमि है। तो उसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है कि भाई वो वहां पे तो नमाज अब पढ़ना बेकार है। अब लोगों के नमाज जो है वो ऑलमाइटी को खुश करने के वास्ते होता नमाज, और उससे गेन हासिल करने के होता। तो जिद पे पड़े तो ना तो नमाज कबूल होती, वहां पे एक्सेप्ट होता, और ना उसे सवाब होता। सिवाय क्या है कि एक वो इनकन्वीनियंस और एक टेंशन होता। और क्या है शरत, जिसको क्या बोलते हैं कि तुम कितना हम कितना बोल के नापने की बात होगी, तुम बड़ा हम बड़ा। तो साइलेंटली लोकल इशू रिजॉल्व करना था उस जमाने में, नहीं करे, नहीं करके उसको अनफॉर्चुनेट पूरा पोलराइज कर दिया कांग्रेस वाले। और कांग्रेस की हमारी सिस्टर जो बोल रही थी, उनको मेरे को थोड़ी फीलिंग ये हुई कि वो लोग पावर हंग्री में है, अभी भूख लग रहा है उनको, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और स्कोप नहीं है। तेलंगाना बना के तेलंगाना में चले गए, आंध्रा में तो पूरे डूब गए, और फिर सेंटर का हाल ऐसा हो गया, और उत्तर प्रदेश पूरा चले गया, पूरा चले जा रहा। और हमारे गांधी जी जो है बैठे हुए हैं, वो फैमिली मोनार्की चला रहे हैं। तो बीजेपी पार्टी में क्या है कि डेमोक्रेसी है कि अटल बिहारी वाजपेयी का बेटा नहीं बैठा वहां पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बेटा नहीं है आज, और फिर एक आइडियोलॉजी है, डेमोक्रेसी है। हो सकता है कि भाई उसमें मेजॉरिटी हिंदुओं की है तो वो लोग उनके फेथ पे चलते और हम लोग हमारे फेथ पे चलते, हमारे को कोई रोका नहीं। मैं भी बीजेपी को रिप्रेजेंट करा मैं, और मुस्लिम सेवा संघ का प्रेसिडेंट हूँ मैं, और एक्टिव हूँ मैं हैदराबाद में। तो अब क्या हो गया कि हिजाब का जो है इशू, छोटा सा इशू है। मैं आपको बताऊं, निजाम जो था हमारे पास हैदराबाद में, निजाम गवर्नमेंट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो थी, वहां पे क्या होता था कि एक ड्रेस कोड था। हिंदुओं ने तो रेस्पेक्ट ऑफ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एवरी स्टूडेंट शुड वेयर शेरवानी। शेरवानी इस्लामिक नहीं है, शेरवानी तो इस्लामिक नहीं है, मगर ड्रेस कोड बनाया के शेरवानी पहनना और रोमी टोपी लगाना, तुर्की टोपी। तो उस वक्त सब लोग लगाते थे तुर्की टोपी, हिंदू भी लगाए, मुसलमान भी लगाए, सब लगाए, मगर इश्यू नहीं बना, नहीं लगाता बोल के नहीं बोला कोई भी, और सब मिलजुल के थे, कभी भी कम्युनल ऐसा इश्यू नहीं बनाए। अगर बनाते थे तो 80% 90% हिंदूज थे, 10% या 15% मुस्लिम्स थे। अगर बादशाह रहा भी तो रिवोल्यूशन आता था, जब जैसा पुलिस एक्शन हुआ, ऑपरेशन पुलो लॉन्ग बिफोर होता था, मगर वो एक्सेप्ट करे ये निजाम रूल, कुतुबशाही रूल को यहाँ के लोग जो थे हिंदूज एक्सेप्ट करे, और कभी इतराज नहीं करे कि भाई तुम नहीं रहना, तुम चले जाओ बोल के, कभी ये नहीं हुआ, बगावत नहीं करे, रिवोल्यूशन नहीं हुआ। तो बताना ये है कि ये छोटा सा हिजाब का इशू जो है स्कूल का है, और जो स्कूल का कोड है वो तो फॉलो करना जरूरी है। हम कोर्ट को जाते तो हमारे को बैंड लगाना पड़ता, गाउन पहनना पड़ता, तो हम ये बोलेंगे कि भाई क्रिश्चियन का है एक कोट, हम नहीं पहनते, और हम कुर्ता पहन के आ जाएंगे बोले तो नहीं चलेगा ना, वो हम बैंड नहीं बनते, ये क्रिश्चियन का है बोले तो नहीं चलेगा। और जो जजमेंट आया वो मैं टेक्निकल बोलता हूं मैं, कि अगर मैं भी अगर जज होता वहां पे कर्नाटक हाई कोर्ट में तो ऐसा ही जजमेंट देता। अब ये ऑर्डिनरी जो है ले मैन बोलते हैं, इनको लीगल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बात करते ही बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को सब कुछ दे दिया बोलता। आर्टिकल 25 में रिलीजियस लिबर्टी जो दी गई है वो लिमिटेड है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है। ये ऐसा नहीं है कि आपको रिलीजियस लिबर्टी दे दी है कि पूरे का पूरा नहीं है, उसमें सोशल है, स्टेट है, और फिर उसमें मॉडिफिकेशन करने का गुंजाइश है, एक लिमिटेड है ये। तो हिजाब क्या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिलेटेड है? कुरान में कहीं भी हिजाब के बारे में नहीं है। चादर ओढ़ना, एक कपड़ा सर पे डालो, बाल नहीं दिखने के बारे में है। और सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में प्रॉफिट के जो मिसेस होते थे तो उनको क्या बोले, मदर्स ऑफ द उम्मा,
तो उनसे जब बात करना है तो चादर पर्दे से बात करो। पर्दा मीन्स वो जमाने में जो दरवाजा बोलते हैं ना, चौखट, कड़पा, तलपू बोलते हैं हम, तो तलपू नहीं रहता था, ओनली पर्दा रहता था। तो वो लेडीज क्या करते थे कि कोई जेंट्स आए तो वो पर्दे की आड़ से बात करते थे, तो पर्दा नशीन है वो। और पर्दा नशीन लेडीज का तो प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अभी तो वो लंबी बात है, मैं डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ कि ये हिजाब का स्कूल के गोइंग चिल्ड्रन के वास्ते लोकल इशू था। उसको हर चीज को आप कोर्ट को जाएंगे तो कोर्ट क्या करेगा कि वजन तोलता, एविडेंस देखता, देखने के बाद में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखता, देखने के बाद में फैसला करता। ऐसा नहीं है कि आप जजों को ब्लेम कर दे रहे हैं। तो अगर जुडिशरी को आप ब्लेम कर रहे हैं तो आप अब यही समझना कि ये गवर्नमेंट नहीं है, ये क्या है कि हिटलर फाशिज्म होगा, हिटलरिज्म होगा। तो हमारी कांग्रेस वालों को क्या है कि भाई बात करते एंटी मुस्लिम बीजेपी है बोलने का एक बात है, तो फिर तुम प्रो मुस्लिम कब हुए थे? तुर्कमान गेट में जब संजय गांधी कितने मुसलमानों के घरों को डिसमेंटल करे, और चन्ना रेड्डी के जमाने में सब्जी मंडी फसाद, हैदराबाद में कर्फ्यू, रमजान में कर्फ्यू कितने मर्तबा हुए, इसका डाटा होना। बहन जी हमारे उस्मा शकीर को मैं बोल रहा हूँ कि ये डाटा आप लाओ। उसके बाद में फिर जब से नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आए तो हैदराबाद में पीस कैसा होगा एनटीआर आने के बाद में। जब एनटीआर आया तो ऐसा बोले कि सब लोग सन्यासी आ गया, हिंदू फंडामेंटलिस्ट आ गया, अब ये आंध्र प्रदेश में मुसलमान नहीं रह सकते। तो एनटीआर बिल्कुल सेक्युलर, सेक्युलर तो हम नहीं बोलते कि, मगर अगर उन्हें रिलीजियस भी है तो नहीं, हिंदू रिलीजियस नहीं बोलता, कोई रिलीजियस इस्लाम नहीं बोलता कि भाई तुम जाके मारो तुम करो। सो मानवतम हर उसमें है, धर्म में। तो मैं हनुमान टेम्पल में पढ़ा और मैं कई पंडितों से मैं पढ़ा, मैं दारुल उलूम में पढ़ा, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में पढ़ा, मगर मैं कहीं भी फीलिंग नहीं देखा। मैं ब्राह्मण्स के साथ बैठा, मैं ब्राह्मण्स के साथ फूड शेयर करता हूं मैं, और ब्राह्मण्स मेरे गुरु है, मगर हम कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखे। अब ये जो बता रहे हैं तो भाई आप इरिटेट करें तो सामने वाला कुछ भी होता ना, एक वो एनिमल जा रहा है उसकी तुमको पकड़ के मोड़ेंगे तो फिर वो काटेगा वो। तो ये तो ह्यूमन बीइंग है आप। तो यहाँ पे क्या है कि जो पार्टीशन हुआ अनफॉर्चुनेट पार्टीशन था, ये कांग्रेस की वजह से हुआ। नेहरू का जो हंगर था प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट बनना, उधर जिन्ना का हंगर था कि मैं फर्स्ट बनना इंडिया का, तो उसमें क्या कर दिए, ये दो टुकड़े कर दिए। और ब्रिटिशर्स भी ये चाह रहे थे कि यूनाइटेड इंडिया नहीं रहना। तो वहां से जो फीलिंग शुरू हो गया, तो अब आज ये चाह रहे हैं कि मुसलमान तो माइनॉरिटी में नहीं है, आई डोंट एक्सेप्ट मुस्लिम्स आर द माइनॉरिटी ऑफ इंडिया। मुस्लिम्स इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। और माइनॉरिटी का जो डेफिनेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसमें 2% पॉपुलेशन को माइनॉरिटी बोलते हैं, 20% पॉपुलेशन को नहीं बोलते माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी स्टेटस जो दिए हैं हम, वो क्यों दिए, अपीजिंग में दिए, क्या दिए, उससे उसको फायदा हो रहा, ओवैसी को फायदा हुआ, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना लिए, और वो करोड़पति होगा, बड़े बड़े गाड़ियों में फिर रहा। और अब रही बात, मैं आई विल कंक्लूड, टाइम ज्यादा ले रहा हूं मैं आपका। तो मैं एक बोलता हूँ कि इस्लाम में डूज एंड डोंट्स है। तो दारुसलाम में एक बैंक चलता, कोऑपरेटिव बैंक, और वहां पे वही बिजनेस होता, 17%, 13%, क्या है, मॉर्टगेज, गोल्ड लोन, हाउस लोन, ये तमाम चलता। तो द बिजनेस इज अंडर द पर्व्यू ऑफ इस्लाम और नॉट, फर्स्ट टू डिसाइड। आप सूद खाते, समझे ना, सूद खाना बोला तो तल्ली तो नहीं पड़कुన్నట్లా ఇస్లాం లా 100 అది sin, 1/100 part of the sin equal to sexual intercourse with the mother, consuming interest। మరి నువ్వు అదే చేస్తున్నావు కదా ఆడ కూర్చొని, वहां पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सूद का कारोबार कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यू शुड कम विद क्लीन हैंड्स। आप आओ पूरे मुसलमान बन के आओ ना भाई। आप जब बात कर रहे हैं तो आप मुसलमान नहीं है, आपके पेट में जो जा रहा है वो हराम जा रहा, पोर्क जा रहा, और आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये शरिया ऐसा है वैसा है। तो हमको ये बताओ शरिया में कि दारुसलाम बैंक चलाना जायज है नहीं है अंडर द इस्लामिक लॉ, एक। और बात करते मोड़ी मोड़ी मोड़ी,
बोल के क्या कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं और मुसलमानों में थ्रेट कर रहे हैं, नहीं यू आर अंडर थ्रेट, यू आर अंडर थ्रेट, आरएसएस, बीजेपी, वो है, कोई भी आपको काम नहीं है उनको, क्या उनका काम वो कर ले रहे हैं। वो लोग डर रहे हैं कि कहीं ये 20% पलट के मार देंगे, 30 मिनट का टाइम दो, हम बता देते जो बोले, तो उससे वो लोग डर जा रहे हैं 80%। तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मगर हम बोलना यही चाह रहे हैं कि ये इंडिया में जो छोटे इश्यूज है उसको पॉलिटिकलाइज करके मुस्लिम्स में एक फियर क्रिएट कर दे रहे हैं और जुडिशरी पे ब्लेम, ये क्या फेक चले आ रहा मुस्लिम्स का कि बाबरी मस्जिद जजमेंट ऐसा है बोले, तो हमको मालूम है कि टेक्निकल क्या है, टेक्निकल लूप होल्स क्या थे उसमें और क्यों दिया। उसमें नजीर अहमद भी है जज, जस्टिस नजीर अहमद आल्सो वन ऑफ द जज है उसमें। तो बोलना है कि उसमें टेक्निकल है, आपका पोजीशन नहीं है 50 इयर्स से, कांग्रेस वाले पोजीशन दे दी है मस्जिद में और कांग्रेस वाले 145 में रिकवरी नहीं करे सीआरपीसी में, बजाय क्या करे खामोश बैठ के बोले टाइटल सूट डालो, बोले टाइटल सूट जब डालते हैं तो इट इज द लायबिलिटी ऑफ द प्लेंटिफ टू प्रूव हिज टाइटल। वो लोगों की जिम्मेदारी नहीं है टाइटल प्रूव करने की, आप टाइटल नहीं प्रूव करे आपका फॉल डाउन हो गया वहां पे आप। और दूसरा क्या है कि जब डिस्प्यूट है तो आप हट सकते हो, वहां पे हट सकते। अब हर चीज की वजह से एक्विजिशन में मस्जिद इफेक्ट हुई, जाके सुप्रीम कोर्ट में बोले तो सुप्रीम कोर्ट बोली भाई इस्लामिक रूल्स क्या है, एसेंशियल्स क्या है, नॉन एसेंशियल्स क्या है, मस्जिद इज नॉट द एसेंशियल ऑफ द इस्लाम बोल के रूलिंग आ गई। आप क्या कर रहे हैं, हर चीज को ले जाके कोर्ट में डाल देना है, तो कोर्ट तो डिलीवर करता है जजमेंट बुक्स को फॉलो करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, रिलीजियस बुक्स को जाते हुए करता है। तो बोलना ये है कि ट्रिपल तलाक के बारे में मेरी बहन बोले कि ये कुरानिक का वो प्रोसीजर नहीं था, ये तलाक बिदा जो है असल क्या है कि प्रॉफिट्स इस्लाम इज डिफरेंट फ्रॉम राइट नो इस्लाम। सलफी इस्लाम, ओरिजिनल इस्लाम बहुत इजी था। उसको बाद में क्या करे कि आयमा है, इमाम्स हनफी, सुन्नी, शाफी, हम्बली, ये 4 इमाम्स क्या करे उसमें रूल्स अपने डाल के उसको स्ट्रिक्ट कर दिए एक। अच्छा ये जो है ना, एक सुन्नी मुस्लिम पे ये प्रॉब्लम है। अब आप जाके देखो बोहरा मुस्लिम है, खोजा मुस्लिम है और दूसरे मुस्लिम्स हैं, शिया है, वो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा और खासतौर पे सुन्नी मुस्लिम को क्यों प्रॉब्लम आ रहा क्वेश्चन है। अब हम जाते बोरा काचीगुड़े में कई बोरास है और जो है बोरों का वो प्रिंस आगा खां है, तो उन्होंने तो हिंदू देख रहा ना मुसलमान देख रहा, अफगानिस्तान से सबको लाग रहा, माइग्रेट कर रहा, वीजा दिला रहा। अभी एनआरसी की जो बात बोल रहे हैं, तो अफगानिस्तान से आने वाले मुसलमान इंडिया में 1 ईयर रह रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद में कनाडा माइग्रेट कर रहा है, हिंदुओं को भी माइग्रेट कर रहा हो आगा का वहां से निकाल 50% पॉपुलेशन को माइग्रेट कर दिया आगा का, हमको मालूम नहीं है। और हम क्या बोल रहे हैं एनआरसी, सीएए, अरे ये बातों से हमको क्या नुकसान हो रहा, सीएए लाए तो भी हमको कोई नुकसान नहीं, एनआरसी करे तो भी नहीं है। अगर एनआरसी करे तो क्या होगा कि जो पाकिस्तानी है और बांग्लादेशी है, या नहीं तो फिर वो म्यांमार से जो लोग आके हैदराबाद में रह रहे हैं और ऑल इंडिया में वो स्प्रेड हो गए हैं, तो वो लोगों को पकड़ के फिर उनके बारे में इंटरनेशनल जूरी है वहाँ पे, इंटरनेशनल फोरम पे ले जाके उसका डिसाइड करते। तो आप नहीं करना बोल के उसका वोट बनाना कि उसका आधार कार्ड बना के उसके वोट लेके आप बोल रहे हैं कि हमको क्या डर है। अब क्या उस्मा शकीर को नहीं बनता है एनआरसी में नाम, या खलील अहमद को नहीं बनता है, या तारिक जमीन को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है जो माइग्रेट होके आए वो लोगों को प्रॉब्लम है। तो एनआरसी नहीं होना, ये नहीं होना, और कांग्रेस क्या कर रही है, हवा दे रही है। और हम देखो भाई आ गए तो एनआरसी भी नहीं होने देंगे हम आपको। अरे क्या एम्प्लॉयमेंट दिए आप 70 साल में, हमको बताओ आप। वो एनआरसी का एनपीए का शुरू हुआ जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे। चलिए मैं फिर आपके पास आता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ कादरी साहब। थोड़ा उसको आप हरा बना लीजिए, आप हरा झंडा लगाइए। हरा झंडा, हरा झंडा मैं करता हूँ, अभी नहीं हुआ।
कर चुका हूँ। क्यों कादरी साहब नहीं हाँ अब आ गया। अब आ गया, बोलिए सर। I start my comments with words of Honorable Justice J.R. Midha, who said in his farewell speech, in the court of justice, both the parties know the truth. It is the judge who is on trial. It is the judge who is on trial. so जो है मैं hijab controversy, I wish to say in the beginning itself, today we are sitting for hijab controversy. Yeah. So Karnataka High Court upholds hijab ban. Yeah. The basic question that arises is, Yeah. has Karnataka High Court applied Shurur Math 1954 Supreme Court judgment which they are bound to apply? That judgment describes essentiality test. Yeah. What is this test? Answer is certainly not. They have not only misinterpreted, they have misapplied, but they have committed blunders in passing this order on hijab issue. This judgment, Shurur Math judgment, contains a definition of what is religion. What is they have defined in 1954 itself. Our courts have taken precaution. It is all embracing, that include different types of foods and dress, which believers consider essential to their faith. Yeah. This broad definition clearly means that if a Muslim girl considers hijab as integral to her faith, then it is. The court cannot sit in the judgment. Court has itself given direction. The conscience of the community and the tenets of religion are the two tests to determine whether this hijab is permissible or not. Begum Sultan Jahan, about whom you have just displayed, the first chancellor of a legal Muslim university, 100 years back, walks for convocation along with the prince for delivering speech in convocation dressed in burqa. Bibi Fatima Bibi of Supreme Court, who was initially a lawyer in Kollam, Kerala, she wears hijab. Supreme Court itself, in Supreme Court also she has worn hijab, the dupatta. Supreme Court Constitutional Bench in its judgment said that insofar as Hindus are concerned, from time to time, from the time they are born till the time they are dead, every action they perform is religious in character. As per the Smriti. As per Smriti, if such is the type of wide definition judges who have adopted, when it comes to Hindus, there is no reason for any judge to say that a practice followed in Islam for centuries is essential or not in character. If you adopt one yardstick for Hindus, Article 14 also orders upon you to follow that dicta. Article 25, Mr. Khalil Ahmed says that it doesn't provide, it's limited in character. I disagree with him. I disagree with him in the sense, Article 25, which protects conscience, also protects practices of religion. These practices are what individuals and communities honestly believe to be practices. No academic debate or judicial scrutiny is needed. Can anybody object to the way Naga sadhus dress? वो तो नंगे रहते हैं ना, और दिगंबर जैन dress? No. For centuries they have not worn the dresses. One might say it is against morality,
The answer is no. They are all religious practices which have been accepted and respected. How many girls hijab? How many girls wear hijab? Was the test applied by Karnataka High Court? That is irrelevant. That is irrelevant. If can I give an illustration? In the Sikh religion, kirpan is an essential element of their religion. If few Sikhs carry kirpan, if few Sikhs doesn't carry, will it alter the concept of essentiality? No. Supreme Court has also dealt with the religious practices. It may be followed by a section of community, but that does not deprive community of essentiality clause. The test adopted by Honorable Karnataka High Court is absolutely wrong. I permit me to read one judgment in which it says there are well-known religions. Supreme Court has said there are well-known religions in India. A religion undoubtedly has its basis in its systems of beliefs or doctrines, which are regarded by those who profess that this religion is conducive to their spiritual well-being. But it would not be correct to say that religion is not else but a doctrine and belief. A religion may not lay down code of ethical rules for its followers, except it might prescribe rituals, observances, ceremonies, and modes of worship which are regarded as integral part of religion, and these forms might extend to matters of food and dress. In Sabarmala, every worshipper goes that wear black. This is the practice. All those who go to Kaaba in Saudi Arabia wear white clothes. These are not issues which judges should decide who should wear. This judgment, which I am reading, was delivered in Commissioner of Hindu Endowment versus Lakshmi Datta Swami Narayan Sirur Mutt case. Yeah. So, But here, now, Kadri sir, let me complete. please, please. Then you Yeah, can, yeah. Complete, no I problem. want to continue with my. Please, go ahead. Then this is Article 14, 15, 25, and 19.1. Each one of the fundamental rights entitled citizens professing religious practices. States have no power to interfere with except on the grounds of health, morality, and public order. Nothing of that sort comes into play. These basic human values are accepted for centuries. Judges do not live in narrow compass, just must know width of the Constitution, ambit and width of these articles to ensure everyone is treated equally. Nobody is discriminated on ground of religion, and nobody is restrained and entering in institutions funded by the state. Everybody has a right to practice religion, and which includes his conscience and practices. Right to life includes right to practice religion, which include his conscience and practices. So long as to where you are not violating dress code substantially, you are wearing uniform. My brother, Advocate Khalil Ahmed has said that in court we go, we dress in a specific black gown. We wear black gown, white shirt, and then a black coat. But have you seen whether at any time court has objected to a person wearing a turban or headgear in South or North India? Senior advocates wear this. So my contention is where uniform is also prescribed, relaxation is given in the sense to accommodate the self-respect and take into consideration what they have inherited. That should be allowed. And my request is freedom of religion is important because freedoms are important and not because religions are important. Freedom is there. Yeah. During Constituent Assembly debate, number of members have told Dr. Ambedkar that on one hand you are giving rights
On the other hand, you are carving out exceptions under subclauses, sub-articles 2 to 6 to Article 19, where state has power to curtail these rights. Dr. Ambedkar's reply was, I would assume the state would never abuse its powers in a way that these rights are whittled down in any manner whatsoever. I salute him. Sardar Patel headed minority committee which drafted the constitution. Patel said majority Hindus must put themselves into the shoes of minority community. I request Mr. Khalil sir, I request of my brother Damodar sir to ponder on this. Sardar Patel heading minority committee while drafting the constitution. Patel sir said majority Hindus must put themselves into the shoes of minority community and understand how they feel. It is for the majority to ensure that minority is made to feel welcome in this community so that we can integrate the minority with the majority. Ambedkar said that no government exercises its power as to provoke Muslim community to rise in a rebellion. What we are seeing today, government should answer this. Has the court given the correct decision? It is for Supreme Court to decide. As far as a lawyer, I can say that they have not only erred, they have failed to understand the spirit, they have failed to convey the spirit and meaning of that judgment. In this sense, they have created a havoc. This judgment has created a havoc. This is for as far as Karnataka High Court judgment on hijab is concerned. My referring to Mr. Khalil Ahmed sir, because I have to, in every panel discussion, we both engage ourselves. You both are eternally engaged. We both are eternally engaged. Eternally engaged. Yeah. The thing is that he says that in Nizam's rule, you are comparing Nizam, a despotic ruler, with a democratic government. There should be some standards for comparison. Level playing field should be there. Equality. Article 14, what it says, you are comparing a despot with a democracy. And secondly, Kudras, I have already replied. Article 25, she says that it's limited. My contention, it is not limited. It doesn't put fetters and minority not. I request Mr. Khalil Saab to provide me under which article or which rule he says that 2% of the population under the government, the United Nations organization previously also have said. I have tried to research. I couldn't locate a 2% of the minority. If the population is 2%, then they enjoy minority status. The framers of the constitutions have thought it well to take the nation to progress. That's why they have provided in governance. Rights are provided and taken care of. The weaker section. It is the weaker section, whether it is women, whether it is minorities. They are given the importance in the sense that security. What Mr. Patel, what he has said, it's not the. I totally agree. Putting a statue of 200 feet of Mr. Patel, follow the words of Mr. Patel. That will be a better service to his thoughts. So he says, I request through you, Dr. Saab, Reddy Saab, Mr. Khalil Saab provides me under which rule he says that Muslims do not form part of the minority. So if he can give me, I will come and participate in another discussion with on your channel. And regarding Surah Azab and Surah Nur, he has said that it is mentioned in there. We have to follow, and it is not that when the courts have given a direction, Supreme Court is very clear on the point that it is the practices which have to be conserved.
which have to be taken into consideration. I have given the example of Naga sadhus. I have given Yeah, the that's okay. example of. But here, if you are done, yeah. if you are done with this, Kadriji, I like to ask you, what is your, in your term, what is minority? See, I am staying in Old City. This show is being live to the world from Old City. Hitherto, there were so many Hindu houses. Now all have become Muslim houses. Now we are only few here. Now, don't you think such a committee should be employed to me, because I have become a religious minority in my own backyard, and I am happy. And again, but at the same time, I am happy about the progressive thinking of the Muslim community who are becoming rich and we are buying the houses. And but at the hindsight, the younger generation, they say this is population explosion. That is one aspect. The second aspect is, before I give it to Mr. Khalil Ahmed, let me make it very clear. The court order is very clear. It is restricted, because I go with 1954 judgment. That is why before you referred, I quoted the example of even Yogi Adityanath ji wearing saffron and attending this office. But here, the Karnataka High Court is very clear and it is substantiated that this refers to only the educational institutions which were on record on the evidential aspect. Now I ask you, can my community go to minority college in the attire of Ayyappa Diksha? Will you allow me? Whether it is minority institution, whether it is Christian minority or Muslim minority. Second aspect, shall we allow people to dictate terms in the educational sector wherein they are grossly divided by your religious practices? Or you say schools and colleges, uniformity should be there, let all religions be the same, let us not distinguish them either by dress or anything else. After you come out, when you go for work or politically, now we are participating, you practice your own things, because you are matured, you know how to conduct yourself without vitiating the order of the society, of the society. That is what the constitution is all about. You are not supposed to create any order. Because you like this, you go and do this. At what cost? Yeah, you like it. Now, you have quoted 1954 judgment. The judgment is very explicit. It says that. No, I'll read it for you, because I love constitution. That is why here I'll try to give you only one thing I can tell you. My only contention in this is the Karnataka High Court limited this judgment to only educational institutions in that particular segment. It is never clearly stated no, it has to be practiced, no. As you rightly said, now see, Uzma Shakir ji she is wearing her own scarf, and which she believes in that, and we are respecting it. And she is comfortable, I am comfortable. We are all comfortable with her. I would request you to go through that judgment. That judgment is very explicit. It clearly says that the funds which are given by the government, where institutions are run by the fund provided by the government, they cannot impose such conditions. It is very explicit. It has taken care of your contention. And that is where I am trying to chip in. I said, shall we allow the religious divide in right from the young children? No, it is not a religious. It is not a religious. Let me see. For 100 or centuries No. If a school comes, now I am asking you. Now I am asking you. Kadriji. Why this issue has cropped up suddenly? That is what I am trying to question. Why did this issue all of a sudden, why did it become such a big hit? And the girls, I wanted to play, but see, this mischief is going on with the WhatsApp. I am unable to play it, Kadri Saab. The girl also says, first hijab, then education. Is that also not wrong? First hijab, then education. You are trying to stress. You are trying to stress. When you say first hijab, then education, I will say first education, no hijab. I am entitled to raise that plea under the garb of this 1954 judgment, Supreme Court judgment. I have that right. No, I'm asking you. You don't want that I should exercise that right? Then you should. Then what I am trying to tell you is, first hijab, then education. You are saying, is it right? Yeah. You accept that? So on the shall I frame that question? Let me complete. Shall I frame this question? Please. Your entire concern is with ladies. You want to deprive. On one side, you say sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas. Is this because you are creating?
భరోసా కర్ ఒక నిమిషం వారు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వన్ ఎట్ ఎ టైం ఒక నిమిషం దామోదర్ రెడ్డి గారు ఒక నిమిషం దామోదర్ రెడ్డి గారు దామోదర్ రెడ్డి గారు క్రాస్ టాక్ వద్దు. దామోదర్ రెడ్డి గారు ఆగండి ఖాద్రి గారు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీరు మాట్లాడదు. దామోదర్ రెడ్డి గారు ఆగండి ప్లీజ్. ఖాద్రి గారు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీరు మాట్లాడదు, ఎందుకంటే వారు ఒక్కొక్కరి తర్వాత మనం మాట్లాడదాం. విల్ లెట్ us టేక్ ఎవ్రీవన్స్ ఒపీనియన్. అది మంచిది. ఎస్ ఖాద్రి సాబ్ బోలిए. In old city, in old city, you have raised a question that Muslims are purchasing houses. They are rather. What is the definition of minority? I am asking today. What is the definition of minority? One corporator, you have become taking control of GHMC. You have got 7 MLAs, MPs, and you are going all around India, and you are getting MLAs. And where is the question of minority now? Where is the question? The central government? Why should they raid? They inquire how they have amassed wealth, so much wealth. That's it's it. a failure That's it. upon your part. That's it. That's It is a it. failure. That is what really. It is a B team of yours. It is a B team of yours. Corruption. That is the corruption. Corruption of the. You have allowed. If a person, if a clerk takes 2,000 rupees, you catch hold of him. If a clerk purchases a fridge, if he doesn't report it to government in his record, you will take action against. Why you are not taking? Why you are failing to take action to public? Corruption, political It is a public corruption, servant. political Why corruption. He has amassed so much wealth. And regarding this old city issue, Saab, I tell you, it is not Hindus, it is not Muslim, it is Maya, it is wealth. It is wealth which is dictating them. No, Muslims also not. I will show you. I'll give you about 10. I'll tell you, Right normal now. Muslims are not at all happy. Normal Muslims have not at all grown. You and me have, and Khalil have also taken statistics. How many have died during Corona? We are witness. No normal Muslim has come up in life. I know several cases Yeah. where these people have broken locks, have entered occupied lands, have Yes, occupied yes. houses. Yes, They have yes. got registered illegally. Right. What is going on? It is because of our CM Chandrasekhar Sahab who has given Hyderabad Old City in Jagir to the Oasis. He has given Hyderabad Old City as Jagir to Oasis, and there is no rule of law there. I tell you. Right. That's the Almost- point. That's the point. That is what I said. For the sake of few votes, for the sake. 45 people be washed away in the recent floods? That's You what. have That's not really taken any ridiculous. action. Developed city. You are taking back Geo 1 month, scrapping 1 month. Yeah. You want to, because Akbar Vaisi Sahab is having farmhouse there in Gandipet. You have given relaxation. What you are doing, Sahab? They don't even everybody speak. is hanging glove. It is an opposition It is poor party. people like us. They don't speak. It is poor Yeah. Let me go to Mr. Khalil साहब, then Damodar Reddy साहब, please. Yeah. Khalil साहब बोलिए. माइनॉरिटी का डेफिनेशन कहाँ से लाया, पूछ रहे आप? हाँ, हमारे खादरी साहब को फिर आप भेजूंगा मैं कि डेफिनेशंस ऑलरेडी I'm coming to you, Uzma ji. Few minutes. ढूंढे Yeah. कि माइनॉरिटी के मतलब क्या है कि 2% से 2% 3% जो भी है उसी को बोलते हैं। 30% नहीं, Kadri साहब wait. Kadri साहब wait. Let him speak. Kadri साहब, let him speak. After that you can speak, please. Yeah. यूएनओ के मीटिंग में कई मर्तबा डिफाइन हुआ हो, मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो ये नहीं है कि मेरी नॉलेज में नहीं है। और इंडिया में जो माइनॉरिटी बना के जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टंट है। कांग्रेस डाली थी और वो पॉलिटिकल स्टंट में डिप्रेशन में रख रहे हैं कि भाई माइनॉरिटी तुम मुसलमान है, तुम डर के Right. तुम अलग रहो, वो अलग रहो। Right. तो असल में मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया में ये स्पिरिट होना कि नेशनलिज्म और वी आर वन Right. That's it. इन पब्लिक लाइफ। और एक मैं पूछना चाहता हूँ, हिजाब फर्स्ट, एजुकेशन नेक्स्ट, इसको आप मानते हैं क्या? नहीं, मैं आ रहा हूँ, मेरे को जरा टाइम दे तो मैं आ रहा हूँ। मैं बोलिए. कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है वो लिमिटेड स्कोप का है, वो पर्टिकुलरली फॉर स्कूल एजुकेशन के उसके से है। ये नहीं है कि आपको पूरे पब्लिक लाइफ में अब हमारे उस्मा शाकिर बहन बन के बैठे हिजाब, तो वो जजमेंट आगे इफेक्ट नहीं कर रहा। अब कई नॉन मुस्लिम्स मारवाड़ीज और कई नॉन मुस्लिम्स लड़कियां जो राइडिंग करते वो सब बन के आते कपड़ा हिजाब, तो उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। स्कूल में यूनिफॉर्मिटी आने के वास्ते वो जियो भी आया और वो स्कूल के हद तक था, और आपको अगर पसंद नहीं है तो दूसरे स्कूल को जा सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ मैं कि अगर दारुल उलूम है, सपोज दारुल उलूम
तो वहां पे कोई भी पढ़ सकता है अरेबिक नॉलेज की वजह से। अगर एक 20-25 वो हिंदू स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं करके पंची बन के आते हैं, तो क्या आप आने देते? वहां पे पंची बन के बुट्टू लगा के आके बैठते, अरबी पढ़ते बोलते हैं, तो आप अलाउ करते वहां पे? मैं वही पूछ रहा हूँ। और बहुत सारे मुसलमान पंची भी बन के आते, पंची बन के वो ये जो गांव में रूरल एरिया में मुसलमान है, तो वो लोग क्या है कि पटेल पटवारिया हैं कि हम देखे तो पंची उंची बन के रहते थे, तो उनके साथ डिस्टिंग्विश होता था कि भाई अरे ये मुसलमान है हिंदू है। तो क्या ड्रेस से आइडेंटिटी होती, क्या मुसलमान हिंदू की? क्वेश्चन। मे- तो मेरे ये सब वन सेकंड कादरी साहब, है। लेट हिम फिनिश। अब जो बैरिस्टर के है ना, खादरी साहब की जमात का नाम देख के कॉपी कर लिए, AIMIM को देख के AIMIM एक कॉपी करे, तो हम बताना चाह रहे हैं कि इससे तो वो यहाँ पे जो उनके वो है रूट्स, वो तो काट नहीं सकते खादरी साहब। एक है। और दूसरा क्या है कि जो बैरिस्टर मीडिया में वो करता, क्या करता, मीडिया ट्रायल करता, उसके वजह कभी वो बैरिस्टर जाके सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करा, कर्नाटक हाई कोर्ट चले जाना था, बैरिस्टर गोंद डाल के, पहले लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस है उसके पास, बैरिस्टर के पास, और वो बैरिस्टर को फॉलो कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी ब्लाइंडली, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है। और वहां जाके ये बैरिस्टर बोल सकता ना वहां पे कि भाई ऐसा करना था, जैसा वैसा करना था, इश्यूज फ्रेम कराना था। ये खाली मीडिया में करते कि अंजना ओम कश्यप के साथ बैठ के बात करते। आप कम्युनिटी को पोलराइज कर रहे हैं। अच्छा, करने से पहले आप पहले डूज एंड फॉलो कर रहे हैं। आर यू ए real follower of Islam or not? First you decide yourself. What is your trade? What is your business? In what business you have been engaged? Is interest business and banking is permissible in Islam? First you decide what is you are consuming food from that source. Interest is prohibited, strictly prohibited in Islam, and you are accepting मीठा मीठा है, गम है, कड़वा कड़वा है, थू थू कर रहे हैं आप, समझे ना? तो आप पहले यू शुड कम विद क्लीन हैंड्स एंड बी ए परफेक्ट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, देन ओनली रिप्रेजेंट एंड देन ओनली टॉक अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी। और आज जो है बैकवर्डनेस मुस्लिम कम्युनिटी का, यही लोग है कि भाई बनाते हैं कि भाई आप लोग माइनॉरिटी में, आप लोगों को हिंदुत्व फोर्सेस मार देंगे। काम नहीं है क्या वो लोगों को? वो लोगों के पास और धंधा नहीं है, क्यों मारते? ये फीलिंग सुन्नी मुस्लिम में क्यों है? ये फीलिंग खुजा में नहीं है, बोरा में नहीं है, इस्माइली में नहीं है, किसी में नहीं है, और ये फीलिंग खाली सुन्नी मुस्लिम में क्यों है? ये क्वेश्चन है मेरा। और 12-15% पॉपुलेशन है आपका, और आप ऐसे वीक नहीं है, और फिजिकली एंड मेंटली वी आर बोर्न इन गुड कंडीशन है। व्हाई शुड वी put ourselves in a minority status? Okay. इसीलिए रखा गया स्कूल एजुकेशन बना लेना और पैसे डाल लेना माइनॉरिटी के स्टेटस में। हमको तो फायदा नहीं हुआ, ये एक कॉमन मुस्लिम को फायदा नहीं है माइनॉरिटी स्टेटस का। दक्कन कॉलेज बनता, ऐसे कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनते, उससे आप मनी मेकिंग मशीन के जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, ATM, और वो नॉन मुस्लिम्स को बेचते आप सीट्स। तो बताना ही है कि माइनॉरिटी स्टेटस से व्हाट ए ले मुस्लिम बेनिफिटेड टिल टाइम, ये बताना पड़ेगा। आप बड़े खुश हो जाते हैं माइनॉरिटी बोलिए, कांग्रेस वालों ने बना दिया कि माइनॉरिटी है, आप बहुत कमजोर है, आपका वोट हमको होना, तो आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस वालों की वजह से ही रिजर्वेशन मिला ना, कांग्रेस वालों की वजह से ही रिजर्वेशन मिला। जब वाईएसआर जी के लिए आवाज उठाए, जब वाईएसआर जी के लिए आवाज उठाए, कई जो फ्रूट वाले हैं, ऑटो वाले हैं, हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। अब आप जिस असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए उन्होंने आज तक कितने मुसलमानों को फ्री एजुकेशन दी है, फ्री सीट्स दी है मेडिकल कॉलेज में। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं, मेरे को ओल्ड सिटी को देखकर, न्यू सिटी को देखकर, हाईटेक सिटी को देख के मेरा दिल रोता है, मेरी आंखों में आंसू आता है। उसके जिम्मेदार कौन? आपके वालिद जो है सबसे पहले पॉलिटिक्स में, उसके बाद आपका MP, आपके साथ MLA, फिर भी ओल्ड सिटी अभी तक तरक्की क्यों नहीं करा है? बंडी वाला अभी तक बंडी वाला है, ऑटो वाला अभी तक ऑटो वाला है। बंडी वाला बहुत अच्छा है, बंडी वाला बंडी में बैठ जाओ, आप बंडी में बैठ जाओ, आपको भी लेके चले आता हो बंडी वाला।
आप बंडी में बैठ के तो देखो, आप आपको मालूम होगा। आप बंडी जा रही तो बैठो, आप उसमें मालूम होगा। आप आ जाइए, आई एम वेलकमिंग यू अलॉन्ग विद बंडी। अब ये छोड़ दो पप्पू, जो है ना, पप्पू को छोड़ दो। नहीं Khalil साहब, let us not become personal. What she is raising is नहीं Khalil साहब, नहीं she is raising a point, इतने दिन ये लोग रूल कर रहे, क्या हुआ हम आम मुस्लिम का, she is raising a point and now अब opposition status है ना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, on the name of religion. AMIM is opposition party now. ये अपने मुफाद के लिए सर्कुलर दे दी थी। सुनिए मैडम, सुनिए, माय फादर इन लॉ was a team member of Abdul Kalam and he was senior Abdul Jalil. He invented silicon carbide. तो वो जमाने में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने एक सर्कुलर दिया कि मुसलमानों को इम्पोर्टेंट डिफेंस के उसमें नहीं रखना, मटेरियल पे रखो। तो ऐसा कई जो चीजें हुई है ना, कांग्रेस के सीक्रेट सर्कुलर्स को अगर आप लीक आउट करो तो मालूम होता है कि आप मुसलमानों के कितने हमदर्द थे। आपको मालूम नहीं है कि कांग्रेस की पॉलिसी थी कि मुसलमानों को डिफेंस में कोई जॉब नहीं आना और साइंटिस्ट डेवलप नहीं होना, और क्या है कि तमाम कलीदी ओहदे जो होते हैं ना उसको दूर रखे। वो क्या मुसलमान आप जो बात बोल रहे साहब, नहीं ये बात गलत है, ये बात गलत है। प्रेसिडेंट थे, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे। अरे कलेजी हो तो इम्पोर्टेंट हो तो पे नहीं देना था। आई एम नॉट साइडिंग कांग्रेस, मगर जाहिर कोई फैक्ट्स की भी बोलिएगा। फखरुद्दीन जी ने अली अहमद, जाकिर सेक्युलर हिंदू रिलीजन को सेक्युलर और आप हिंदुत्व में जो है ना सेक्युलर पॉलिसी है, उसमें हिंदुत्व में अगर ये जो हिंदुत्व है, वे ऑफ लाइफ है, तो वो अगर सॉफ्ट नहीं होता तो इतने मुसलमान इंडिया में रहते नहीं थे। अरे वाह वाह वाह, क्या सेक्युलरिज्म मानते थे आप हिंदुस्तान की आजादी में आप देखिए मुसलमानों का कितना योगदान है। आप क्या बात कर रहे हैं? मुस्लिम पार्टीशन के टाइम पे हम लोगों ने हिंदुस्तान चुना, हम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं गए। हमारी तो ऐसी वफादारी है, हम तो इसी जमीन पे हमारे को इसी जमीन पे हम 5 टाइम सर झुकाते हैं और इसी जमीन में हमारे जबरदस्ती करके नहीं भेजे यहाँ से, जैसा पाकिस्तान से हिंदुओं को किक आउट कर दी करे ना। गलत है, नजरिया गलत है। दामोदर रेड्डी गाరు చెప్పండి, एक सेकंड साहब, दामोदर रेड्डी साहब बोलिए, एक बात बोलिए, एक सेकंड, हिंदू मुसलमान एक सेकंड, शिव प्रसाद रेड्डी आई विल कंक्लूड। या एक लेट हिम कंक्लूड। खलील साहब का दो चीजों का जवाब देना चाह रहा हूं। मैं एक सेकंड कादरी साहब मैं दे रहा हूं। कादरी साहब इस कर्नाटका हाई कोर्ट इस कर्नाटका हाई कोर्ट लेट दामोदर रेड्डी एक बात, एक साहब तारक साहब एक सेकंड, इट विल फॉलो सुप्रीम कोर्ट राइट। कादरी साहब एक सेकंड, नहीं उज़मा जी और खलील साहब, लेट दामोदर रेड्डी से वन थिंग। नहीं आप सभी से नहीं आप बोल रहे थे, रजी साहब साहब बोल रहे थे कि तो हिंदू को कोई शिक्षण पढ़ाया था। भाई नहीं आप लोग अगर नहीं एक के बाद नहीं सुनिए, आप एक के बाद एक बात करें तो नहीं सुनना आप लोग, नहीं एक के बाद एक बात करें तो सबका सुनने में आएगा। एक के बाद एक बात करिए प्लीज। कोई हिजाब करता है, कोई नहीं करता है, बस दैट्स इट should not become a political issue. దామోదర్ రెడ్డి గారు ఒక మాట చెప్పండి, తర్వాత చెప్పండి దామోదర్ రెడ్డి గారు చెప్పండి ఫాస్ట్ గా చెప్పండి ముగిద్దాం. You are supporting hijab or burqa, whatever niqab, or you are supporting in schools also or not? Number 1 ये बात बोलने क्या, you are supporting hijab। ठहरिए कादरी साहब, ठहरिए, लेट हिम कंप्लीट। कादरी साहब लेट हिम कंप्लीट प्लीज, बाद में बोलिए आप। मैं एक ही बात आप इतना बात किया ना, मैं एक बात नहीं किया ना, बोलिए। अभी मेरा చెప్పండి దామోదర్ రెడ్డి మీరు చెప్పండి। मैं एक ही क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, हिजाब, you are supporting हिजाब or not?
जवाब देना। But simple आप मेरे से पूछ रहे हैं, I simple ask you the question. आप मेरे से पूछ रहे हैं, Are इसको not पूछ रहे हैं in education institutions, not outside of the things. I'm asking only one thing. You are supporting or not? Yes, supporting. I am supporting As per hijab, Supreme but Court judgment. As per each Supreme one, Court each judgment. one and individual have their own identity. hijab करें या नहीं करें? बहन जी मैं बात करने का మీరు అడిగిన बोल रहे आप करेंगे इट्स योर विल इट्स योर विश आई एम नॉट अपोजिंग और एनीथिंग एक ही बात बोल सकते क्या भारत माता की जय आप बोल सकते हाँ, भारत माता की जय। भारत Wonderful. माता की जय बोलने में क्या है? We are living in it. రైట్ దట్స్ గ్రేట్ దట్స్ ద స్పిరిట్ That is- हमारी तो वफादारी भारत माता के साथ रहती है। हम तो भारत माता की जमीन पे 5 टाइम तहज्जुद पढ़ने वाले जो रात में नमाज पढ़ते हैं, 6 टाइम सजदा मारते हैं भारत माता पे। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ खालिल साहब बोल सकते हैं क्या भारत माता की जय को मैं जनाब जनाब जनाबे वाला सुनिए मैं एक ही बात भारत माता की जय बोल सकते हमारे को कुछ भी एतराज नहीं है सुनिए हमारे को कोई भी दामोदर आपत्ति रेड्डी नहीं है इसमें, हमारे को कोई भी एतराज नहीं है। आप बोल लेते तो हमारे दीजिए religion doesn't आप teach us बोले तो this. दीजिए मैं हर एक बार बोल सकता हूँ भारत माता की जय आप बोल सकते हैं नहीं बोल हाँ, तो सकते मैं भी क्यों नहीं बोल सकती हूँ सकते भारत माता क्यों की नहीं जय। बोल सकते मेरे अरे को भारत बहुत माता की जय बोल मैं भी सकते बोलूंगी। दामोदर रेड्डी साहब की भी जय बोल सकते दामोदर रेड्डी साहब की भी जय बोल सकते जी हम हमारे को कोई आपत्ति नहीं। और बोल दीजिए और की जय, तारिक भाई की जय, खलील भाई की जय, हम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत अजी चाहे दामोदर रेड्डी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। because you are not Indian you are not saying भारत माता की जय भारत माता is everybody's mother वो मुस्लिम है ईसाई है नहीं तो हिंदू है जैन है कुछ भी हो दो उसको भारत माता है आप बोल रहे हैं मैं भारत माता नहीं बोल रहा हूँ you are not Indian you are not mixed with the Indian still you are saying Who is saying that we are not Indian? Who is saying that we are not Indian? This is your mentality. This is your mentality, how you want to think and how you want to give it what sort of a color you want to give it to. आप बोलिए ना मैं बोल रहा हूँ ना 2 मिनट देखिए, हिंदूज जब मरते हैं, हिंदूज को मरने के बाद जलाते हैं, फिर उनकी जो अस्थियां हैं वो गंगा में बहती हैं। वो गंगा नदी जाके कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में। मुसलमानों को ऐसा है, वो लोग जब मरते हैं उनको जमीन में दफनाया जाता है और उनको इसी जमीन में दफनाते हैं। हमारा तो शरीर कहीं नहीं जाता, हमारा शरीर यही है हिंदुस्तान की मिट्टी में। और इससे बढ़ के मुसलमान क्या वफादारी का सबूत देंगे? Don't tell me this all bull and crap. See, this is all depends on the mentality. This is how you people, you know, मजहब के नाम पे आप क्या सबकी रोटियां सेकते हैं। This is not good. of the Supreme Court. You are not aware with the Parliament. who says I should not come in between the religious matters. There is no need to give the verdict. your daydreaming it is your daydreaming So you are opposing. Why you are opposing? आज मुसलमानों पे उंगली उठी है, कल को सरदारों पे उंगली उठेगी कि पगड़ी नहीं बांधना, कड़ा नहीं पहनना, जो उनके रिलीजियस हकूक है। नहीं If we keep on mouth shut like this, we won't be able to live our life on our own. आप सुनिए हमें पहले सांस भी लेनी है तो तेरे को भाजपा वालों से, आरएसएस वालों से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा कि हम सांस लें या नहीं लें, हम सांस छोड़ें या नहीं छोड़ें, हम कौन से कपड़े पहने या नहीं पहने। दिस इज नॉट फेयर। समझ में नहीं आ रहा एक कांग्रेस का ये वो क्या होता है सुनता नहीं है ना मतलब क्या हम क्या बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं कांग्रेस ना में इन्वॉल्व ही नहीं है। अब कांग्रेस पर हिजाब के साथ क्यों कर रहे हैं? Congress has nothing to do with hijab, or Congress has nothing to do with the verdict of Supreme Court or High Court. She's saying that Damodar Garu, she's saying Congress has nothing to do with hijab or Supreme Court or High Court. She's trying to say Bharat Mata ki Jai. One even Khalil Saab, everyone accepts we are all Indians. First, see we have see it is माता की धरती में मेरे शरीर को दफनाया जाएगा, उस भारत माता की जय। I have no problem. सी इट इज़ वेरी क्लियर वी आर ऑल इंडियंस। नहीं हम ये सोच के चलते हैं कि हम पूरे भारत देखिए हम पूरे भारतवासी है। तारिक भाई भी बोले भारत माता
की जाए। हाजी साहब अगर मेरे को बोलने दिए तो फिर सुनना चाहे तो ना। नहीं आप एंड करिए, आप ही ज़्यादा टाइम लिए। हम लोग डिबेट में बैठे हैं, हमारा हक है बोलने का। बोलिए सर तारिक साहब। के मुताबिक हम कुछ भी बोल सकते हैं। आपको सुनाने खलील साहब को सुनाने तो बोलने का नहीं है हमारे को। नहीं हम जो है पानी भी नहीं तो चलिए, जो है ना, let me cool all, let us respect चलिए सब, let us respect all religions and let us only hope we are all citizens and children, education, especially school going children or college going, should not fall into the trap of communal leanings and we should come. It is a right which they have been enjoying. No, okay, let them enjoy the right. At the same time, now Hindus will also will go and say that when they go to a minority institution, we will wear this. Let us not complicate. Let us, yes, rights should be taken as rights issues only. Let us not get meddled with religion. That is what I want to say. It is not getting. I have been practicing since centuries. Chaliye sir. I am giving you 100. Chalo, let us pay attention to this. Let us say bye with this song. Dr. Seva, are we over with the debate? Just listen to this song and we'll say bye. We are all Indians. I want to give a reply. We are all Indians. Let us enjoy Indianism. Who says? Why are you doubting? Why should you ask such a question? I strongly protest. No. Who said? Who are you to say that we are Sir, Indians? Sir, let me We are again more read. Indians than No, Kadri Sahab, let me again reiterate. We are all Indians. Let us enjoy every right. Let us not be divided in the name of religion, caste, creed, or politics, or vote bank politics. That's it. No, this is nothing. But I have been enjoying since centuries. Again, you are saying the same. Again, you are saying the same. I am saying, let us all be Indians together as you have been for centuries. Let us to be together, come whatever may. That's what I am trying to say. So that we can enjoy our rights and we can defeat and we. No, don't point out aspersions. Right. पढ़ने के लिए आइए, आप पढ़ने के लिए आइए. Every born citizen in this country has a right to education, right to life, right to health. मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, बागा रेड्डी साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे, एमपी साहब जो थे, उनको जामिया निजामिया में पढ़ने दिया गया. मैं ये पॉइंट को एम्फसाइज कर रहा हूँ. That is what I am trying to tell you. That is what in the बागारेड्डी का को पंजीवन के आने नहीं दिए वहाँ पे. अरे आप देखेंगे, आपको कुछ मालूम ही नहीं है. आपको कुछ मालूम नहीं है. आप सिर्फ हवाई बातें करते हैं. आप सिर्फ हवाई बातें करते हैं. नहीं कादरी साहब, see when I am trying to play a song so that let us enjoy, relax. मैं एक ही पूछना था, minorities institutions में एक हिंदू या क्रिश्चियन आता रिलीजियस अटायर लेके वहाँ जाने पर आने देंगे या नहीं, आप बोलिए. क्यों नहीं आने देते? He has a right. If he wants to wear, let him wear and go. Who is stopping him? आप hypothetical सवाल. I am not hypothetical. I am directly asking you. No hypothetical. Directly asking you. No hypothetical. Directly asking you. Am I running an institution? If somebody is not allowing, give a letter to us. that is what. यहाँ पर हिजाब का भी यही है. हिजाब का भी हम क्या बोल रहे हैं? जो रोक रहे हैं उनको आप लेके आप मुद्दा क्यों बना रहे हैं इसको? हमारे को मुसलमान का खून नहीं चाहिए, तब तो यही बोलते हैं ना, एक जान बचानी है. ओ नेगेटिव नहीं मैडम, ये शो में मैडम उज़मा जी ये नहीं उज़मा जी ये शो में उज़मा जी ये शो में उज़मा जी let me cool you all. Let me tell you, इस शो में there is no divide on basis of religion, caste or creed. इस शो में everyone has right to speak, right to opine. This is what Dr. TSPR show is all about. You have every right to opine and you stay together, you practice and we respect it. That's it. And we are discussing, debating, and this is democracy.
and this we are debating here. So for God's sake, don't try to blackmail. Don't try to blackmail. Khalil Saab is in the habit of blackmailing. no, that's what again, Qadri Saab, you are such a seasoned politician, seasoned advocate. Let us not judge people. Let us not judge people, Qadri Saab. Kindly understand. Everyone has got right. You have a right. Now you are trying to say so many things. He raises questions about which he doesn't have any knowledge. नहीं, he said he is going to provide you with that script of your minority का आप देंगे आपको, next time उसके ऊपर discuss करेंगे. खादरे साहब सुनिए, एक मिनट सुनिए. मुझे बोलने दीजिए. नहीं, आप बोल दीजिए, आप बस है सब. रेड्डी हॉस्टल निजाम के दौर का है. रेड्डी हॉस्टल निजाम के दौर का है. और मुस्लिम हॉस्टल नहीं रहा. देखिए, आज इसी बात करते रहते हैं. आप लोग क्या कर रहे हैं? आप पैगंबर की सुन्नत को नहीं अपना रहे हैं. उज़मा जी चले गए. नहीं, I wanted to play this song. उज़मा जी चले गए. Let us end this debate stating that hijab, whether it is a right issue, religious issue, or whatever issue it is, we want every child. No, you are not allowing me. See, I have allowed you to speak such a for long time. You are not allowing me to speak. I say every child should go to school, college. Let them get their education, irrespective of caste, creed or religion, so that they become better citizens to serve, because after us, that is the generation. I don't want any generation to be limited or dragged down in the name of dress or religion, code or whatever that nonsense is. Let us be all together. Yeah. Listen to me 1 minute. Lady. अरे बोलते जाते हैं. चलिए एंड करिए साहब. लेट मी प्ले दिस सॉन्ग एंड एंड. They are doing their service. एक मिनट सुनो, आप सुनो एक मिनट. जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से माइग्रेट करे थे मदीना, सुनिए आप हादरी साहब, बोलिए सुन लो. मदीना गए थे. मक्का से मदीना जब गए थे तो वहाँ पे जूस से अकॉर्ड करे नहीं और नॉन मुस्लिम से अकॉर्ड करे ना प्रॉफिट. तो यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉफिट्स पाथ and you are raising RSS is my enemy, BJP is my enemy. You should not enter account with the BJP or RSS. Who says you are telling like that? Who says you are creating a problem for Muslims by telling people? You are not following the prophet path. अरे बाबा, आप हमारे तो नहीं, Khalil साहब, let us not go personal. जब बिली के मोहब्बत से बिली के Khalil साहब, let us not go personal. See, we are discussing an issue. Let us not go into personal way of. Personal नहीं है. Let us not go personal. Khadri साहब have to follow the. Shiva Prasad Reddy साहब, just listen to me 1 minute. Yeah, बोलिए. Khadri साहब is the follower of Islam, and he is not following the path of prophet. Prophet migrated who are from you Makkah to sit in judgment? Who are you to sit in judgment and to pronounce judgment? You are habituated of. Had you followed the prophet path, you would not raise the RSS issue, BJP issue. Who is raising? You are Madina mein. In the entire discussion, have I raised that RSS BJP issue? Have I raised? नहीं, Qadri साहब has not raised. Khalil साहब. You are bearing RSS, BJP, RSS. Who is telling? नहीं, Qadri साहब नहीं बोले. Khalil साहब, नहीं, you stand corrected. Qadri साहब नहीं बोले. उज़मा जी बोले थे बीच में. And Qadri साहब नहीं बोले. Qadri साहब has not taken the name of RSS or BJP till now. He says this is there in Islam. This is what he is trying to say. Hijab ऐसा है. Court has. Karnataka court should not have done this. This is what he is saying. He has not said anything against RSS or BJP. He says Karnataka court should have not done this. I am not in the habit of thinking like that. 1954 में Supreme Court, there is a Supreme Court judgment in 19. This is what he was trying to refer. He was not trying to put this thing, but he was clearly saying how old city Muslims are equally bad as Hindus, old city Hindus. This is what he was trying to refer. As you also agreed to that, and everyone, even Uzma ji was agreeing to that. We don't know who is buying and why such type of wealth is not being inquired into by the ruling parties, he said, whether it is Congress or BJP. This is what he was trying to say. That we have to accept. That is a proven fact. Who are buying, who is becoming rich in old city? आप बताइए. And why there is no investigation? This is what he is questioning. That we have to accept. Those are the facts. Am I right, Khalil sir? You have gone through some hadsa. Listen to me, Reddy साहब, अगर बच्चियां स्कूल में ड्रेस कोड फॉलो करें तो क्या वो they are not Muslims? No, that I leave it to their own judgment. That's what. See, I asked you, hijab or education or hijab. That's what. Judgment. We have a right to wear it.
अरे यू से अरे भाई वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट. अरे यार अब ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो पेट में दर्द हुआ तो पूरी दवा खाई. अरे क्या है, अरे आप जो एज एडवोकेट, प्रूडेंट एडवोकेट, व्हाट इज द पोजीशन? कैन कर्नाटक हाई कोर्ट ओवरलुक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन व्हिच इज अ लॉ? You should ask like that. You should question the Karnataka High Court judgment. Instead of that, you are speaking in a different way. अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या है कि सेट असाइड नहीं करती, डिस्मिस करती, तो आप सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम करते क्या? अब अरे भाई हमारा ओपिनियन है, we have a right to discuss. See, there is Khalil साहब, नहीं, you Khalil साहब, you stick to your opinion. He is sticking to his opinion. He says what tomorrow if Supreme Court this thing comes into play, he is looking, let him sit on his own opinion. And you have your own opinion. That is why we are discussing. This is the beauty of democracy. I am telling you. आप किसके साथ बैठे हैं? You want that we shouldn't have any opinion also? आप किसके साथ बैठ रहे हैं? कौन सी पार्टी के साथ बैठ रहे हैं? क्या है? You don't want to have our right. Adri ji, what is the wrong? Girls are following the school's rules. Why you are objecting? साहब ये मैं दो चीजें हैं इसमें. मत मानो, रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स रहता, ट्रैफिक रूल्स हिसाब से जाते हैं ना. स्कूल रूल्स है, स्कूल से आप जाने के लिए आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं है. आप तकलीफ है तो वो बच्चे को निकाल के तुम्हारा मदरसा में ज्वाइन करो. क्या होता है? अरे आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि गवर्नमेंट के जो सुनिए साहब, आप बोले सवाल करें ना, आप सवाल करें ना. स्कूल्स को रूल्स है, स्कूल को रूल्स रहता ना, ट्रैफिक को रूल्स रहता ना, वो रूल्स को फॉलो करना है. क्या आपको क्या तकलीफ है? कौन बोल रहा तकलीफ है? हम बोल रहे हैं आप ये रूल बनाने से पहले आपके ऊपर डायरेक्शन है, ऐसा रूल नहीं बना सकते. Supporting Islam, that's why I'm saying, if you're not interested with that school, go to, you leave from the school. What is the wrong? What? I'm having a right. I'm having a right under constitution, under Supreme Court. मैं क्या बोल रहा हूँ वो इसका बात का आंसर दे दो. मैं बोल रहा हूँ ना साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं. रूल्स रहता, रूल्स के हिसाब से वो बच्ची है, वो बच्चे स्कूल को जाने का एक्सेप्ट करता नहीं करता. अगर रूल फॉलो करो तो क्या मुसलमान नहीं होगा? रूल बनाने का हक ही नहीं है. स्कूल को रूल बनाने का वैसा हक ही नहीं है. वेरी फंडामेंटलिस्ट. यू आर నేను దామోదర్ రెడ్డి గారు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే స్కూల్ కు ఆ రూల్ పాస్ చేయడానికి లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వెన్ దే టేక్ గవర్నమెంట్ నుంచి సపోర్ట్ తీసుకుంటే దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ హి వాస్ ట్రైయింగ్ టు రెఫర్. ఐ యామ్ రైట్ కాదరి సార్? स्कूल को ऐसा रूल बनाने का हक ही नहीं है. अब आप क्या बोल रहे हैं? स्कूल का हक ही नहीं बोल तो कैसा बोल सकते हैं? अरे कानून ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का रूल ऐसा है, मैं कैसा बोल सकता हूँ? बोल तो దామోదర్ రెడ్డి గారు వినండి. దామోదర్ రెడ్డి గారు, there is a rule. దామోదర్ రెడ్డి గారు there is a rule. If you take some any help from the government, schools cannot impose. That's what he is trying to refer, sir. अब क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं दामोदर रेड्डी गारू, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को? क्या सही मैसेज दे रहे हैं? आप जो गलत बात बोल रहे हैं उसको सही कर रहे हैं. गलत बात नहीं है. मेरा बात क्या है, वो बात के आपका आंसर नहीं है आपका पास. कहीं को दे रहे हैं, आप समझ रहे नहीं. नहीं దామోదర్ రెడ్డి గారు ఒకటి దామోదర్ రెడ్డి గారు समझ जा रहे हैं. रेड्डी साहब దామోదర్ రెడ్డి గారు దామోదర్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఏంది అంటే, if you take any help from the government, the schools cannot impose any restrictions on the students. This is what he is trying to say. ఇప్పుడు అర్థమైందా? స్కూల్స్ మన గవర్నమెంట్ నుంచి ఏది సహాయం తీసుకున్నా కొన్ని గవర్నమెంట్స్ వేరు తిరుగుంటారు, ఒక దగ్గర వేరుతుంది సార్. ఇప్పుడు అక్కడ చేంజ్ చేసింది. కర్ణాటక గవర్నమెంటే ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి, హైకోర్టు హెల్ప్ చేసింది. అది కూడా తప్పు సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ప్రకారం అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు అక్కడ ఏం మార్పులు ఉంటాయో చూద్దాం. ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండిందంటే స్కూల్లో, నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. బట్ మేము చట్టం చెప్తున్నాం, నేను ఖాతరి చెప్పేది చట్టం. అట్లా నేను ఎంబీఏ క్లాసులు చెప్పేటప్పుడు, ఎంబీఏ కొన్ని విజిటింగ్ లెక్చర్గా కొన్ని కాలేజీలో చెప్పినప్పుడు, ఒక కాలేజీలో పోతే ఫ్రైడే రోజు ఏంటంటే అందరు కూడా, అంటే అలా ఉన్న కొంతమంది పీపుల్ 10 people
మేబీ 10 or 12 పీపుల్ ఎంబీఏ క్లాసులో ఏం చేశారంటే అందరూ వాళ్ళ Sure. మసీద్ పోతారు కదా ఆ డ్రెస్ వేసుకొని వచ్చారు. నేను అడిగాను, అడిగితే ఇది ఫ్రైడే రోజు సార్ ఇది స్పెషల్ మాకు వేసుకుంటాము అని చెప్పాను. నేను చెప్పాను వాట్ ఈస్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ద కాలేజ్. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ కాలేజ్ ఏమున్నాయి, ఎంబీఏ ఇస్ అ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్. ఆర్గ్యూడ్ మీ ఏమని, మేము ఇట్లానే వస్తాము, మేము ఇట్లాగానే వస్తాము. ఫ్రైడే రోజు నమాజ్ చేయడం తప్పంటలేదు నేను. ఫ్రైడే రోజు నమాజ్ పో, నేనేమో దానికి ఎవరు ఆపడం లేదు. ఏ బీజేపీ పార్టీ ఆపదు నమాజ్ చేసుకుంటా అంటే, ఏ పార్టీ ఆపదు, కాంగ్రెస్ ఆపదు. కానీ నువ్వు కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు కాలేజ్ లోపల నువ్వు మెయింటైన్ సమ్ కామన్ ఏమంటారు దాన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. Wear the shoe, wear the pant, wear the shirt, that's the in shirt, don't use the t-shirts. When అది ఎంబీఏ ఎంబీఏ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్. నేను అక్కడ అంటే I will use one comment. Islam prohibits photography. Islam prohibits photography and videography, whatever it may be. But why Khalil sir come to this forum and representing on video? He must explain me. Should explain me. फोटो पाबंदी है कि इस्लाम में फोटो नहीं लेना, ये वीडियो नहीं करना, ये नहीं करना. तो आप यहाँ पे आके जो कर रहे हैं वो इस्लामिक एक्ट है या नहीं है, खातिर मेरे को समझा दीजिए पहले. दामोदर रेड्डी साहब, डॉक्टर रेड्डी साहब, ये इन्हों भी जो है पार्टी की पॉलिसी पे भी जा रहे हैं. कोई भी पार्टी हो, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने को जो है ब्लैकआउट करना चाह रहे. ये देखिए कि कितने अच्छे नहीं you are मेरी से बड़ी वीडियोग्राफी पे आए हैं और हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. नहीं एक्ट है वो इस्लामिक एक्ट है या नहीं है, आप मेरे को बोल दीजिए. ये बात, ये जो है बच्चों को रोकने का, पढ़ाई से रोकने का एक हरबा है. इट्स एम्प्लॉयड नहीं खातिर सबको छोड़ो, नहीं है कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है. दिमाग let me express my opinion. You can give a rebuttal ये afterwards. कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उसका इस्लामिक स्टेटस क्या है मेरे को आप ये बता दो. क्या నేను आज एक कॉन्फ्रेंस में वीडियोग्राफी पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में आए हैं. इस इस्लाम परमिट यू टू रिप्रेजेंट ऑन वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी. why not can I pose the same question to you? Why not? Profit is strictly prohibited. Photography. There are some relaxations if you cannot understand. और एक बात बोलो खादरी साहब और एक बात बोलो, अगर बच्चे हिजाब नहीं लेके अगर स्कूल में बैठे तो क्या वो मुसलमान नहीं है? There will be no more Muslims under which class of Islam? वो लोग मुसलमान नहीं होते. आप दस्तूर को मानते हैं? दस्तूर के ऊपर जो फैसला दिया गया उसको मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दस्तूर में बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, बोले तो आप ऐसा कर सकते क्या? आप do you have any faith in the constitution? आप बोलेंगे मेरे को रिलीजियस लिबर्टी है. What you are talking? जाके चौराहे पे बैठ के मैं ये काम करूंगा, मैं क्या बोलते, अब मैं मैं गौ हत्या करूंगा, मैं बीफ खाऊंगा चौराहे पे, मेरे को रिलीजियस लिबर्टी. अल्लाह आप ऐसे बातें कर रहे हैं. हम कतन इस बात के कायल नहीं है. आपकी इत्तला के लिए हमारे बुजुर्ग रेड्डी साहब, बोलिए कादरी साहब. हमारे ग्रैंड फादर गुलबर्गे में है रुकुद्दीन तोला, उनके डिसाइपल्स को बोल दिए थे कि जो है गोश्त गाय का नहीं, किसी भी गोश्त खाए तो नहीं आना. ऐसा ख्याल रखते हैं हम आपके ऐसे बेकार बातें नहीं करते. हम ऐसे बेकार बातें नहीं करते जो है लिमिटेड है. just like नहीं we respect you कादरी साहब. हमको क्या करना है, पीसफुल लिविंग बनाना है. नहीं कादरी साहब, खलील साहब कादरी साहब ऐसा गरगलाने की बातें नहीं करते जैसा कश्मीर फाइल बनाए वैसा. नहीं कादरी साहब, आप बिल्कुल जो है वैसी अंदाज में बात कर रहे हैं. आप खाते नहीं सर, चलो let us not become personal. We will respect Kadri साहब, we will respect Khalil साहब, దామోదర్ రెడ్డి గారు, అందరి మనం ఒకటి ఇక్కడ పర్సనల్ అజెండాస్ లేవు. Let us not get into personal agendas. एक बात बोल देता हूँ. क्या खलील साहब गुस्से में चले गए? खलील साहब पूछे तो मुसलमान को हिंदू को जो है स्कूल में आने देते क्या? जामिया निज़ामिया रिलीजियस जो है सेमिनरी है, दीनी जामिया ओल्ड सिटी की, वो जो है उस जमाने में
जो बागरेड्डी साहब MP साहब कांग्रेस के जो थे उनको वहाँ पढ़ाए, उनको ऐसा है पढ़ने देते साहब, समझदार लोग पढ़ने देते, बेवकूफ लोग ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते। और जो है मैं सॉरी टू से वो स्कूल कर्नाटक स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल जो बोले हैं ये बच्चे, आई फील अशेम्ड ऑफ वाइस प्रिंसिपल टॉकिंग इन दैट फैशन। अरे ये यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स। आप जब क्या परेशान कर रहे हैं, बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सिर्फ खाली कुछ बोलते हैं पाकिस्तानी है, कोई टेररिस्ट है, ये कोई बात है आपकी? Right. चलिए, let us just end it here with all good luck. And you are all esteemed guests. You share everything and we respect it, and that is how it should be. Let us respect each other's opinions. Let us not judge or prejudge. We are not here to judge or prejudge. We are really discussing. Personal animosity नहीं है। नहीं, no, you should not. We should not. मिलके रहना है, मिलके मरना है। And we should discuss, sir. कोई भी issue हो, let us discuss like this. That is democracy. This is the beauty of democracy. This is how we should discuss. हमारी इबादत में भी हम जो है वजू करके वो हाथ धो के जमीन पे सजदा करते, मरे तो भी पानी नहा के दफन होते। हम आप बोले भारत माता, अरे भारत माता की जमीन है ना ये। Wonderful. That's important. चलो I wanted to actually मैं लता मंगेशकर की सॉन्ग प्ले करना चाहता, लेकिन अब एक ही बात बोलेंगे, भारत माता की जय। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। వండర్ఫుల్ సభీ లోగోంకు భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సుఖ నిద్ర, శుభరాత్రి. దేశ విదేశాల్లో ఉన్న అందరికీ శుభ ఉదయం, శుభ మధ్యాహ్నం. కాద్రి గారికి శుభ సాయంత్రం. మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళీ పునఃప్రసారం చెప్తాం. మళ్ళీ ఒకసారి డాక్టర్ TSPR ఛానల్స్ను సపోర్ట్ చేయండి. డాక్టర్ TSPR ఛానల్, సిటిజన్స్ డాక్టర్ TSPR ఛానల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పీపుల్ డాక్టర్ TSPR ఛానల్. సబ్స్క్రైబ్, షేర్ అండ్ సపోర్ట్. वी आर देयर इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. केवलम प्रजाहितंलोने, हम केवल प्रजाहित में ही हम काम करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू सर. टेक केयर. बाय सर.